नमस्ते बहनों और भाइयों, बहुत ही जल्द शुरू हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ा वॉइस इंडस्ट्री फेस्टिवल, इंडिया वॉइस फेस्ट।
वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप सबका स्वागत है। हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, अभी शुरुआत होगी तो जब बात होती है इंडिया वॉइस फेस्ट की तो सबसे पहले आता है इंडिया। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने अपने सीट के पास चले जाएं और हम राष्ट्रगान की तैयारी करें। अगले कुछ सेकंड्स में हम सब राष्ट्रगान को अपना समय देंगे। कृपया आप अपनी अपनी जगह पर पहुंचें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमें पक्का पता था कि ये नारा जरूर लगेगा और उसी की उम्मीद थी। इसी जोश को हम रखें बरकरार और इस जोश के साथ साथ मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए हैं। हम सब खुश हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिल मिला के बातचीत हुई। परंतु सबसे अहम बात, Sugar Medias presents India Voice Fest 2022, the Indian Voice Industry Conference and Awards. I love the energy that is right here on the floor, conceived and curated by Darpan Mehta, and there is a whole lot of thanks to the ones who produced and organized it, Sugar Medias. We have the main sponsor, Sound and Vision, and the associate sponsor, Audio Magic. But that is where it all starts. इस सब के साथ साथ कभी भी जब भी हमें दिशा चाहिए होती है, डायरेक्शन चाहिए होता है और हमें ये जानना होता है कि हम इससे आगे कहाँ जाएं या कोई शुरुआत करें, उसमें अहम भूमिका होती है हमारे बड़ों की और वो हमें रास्ता दिखलाते हैं। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से हमारी संस्कृति कहती है, हम हर शाम हर अच्छे कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं, the lamp lighting ceremony. And for that, I would like to request the seniors in the front row to kindly join us. I would request Darpan Mehta to also please escort them towards the lamp so that we can first illuminate the evening with the light, with the brightness that is already in your eyes, that is already on your face. We request the seniors in the front row to kindly come forward towards the right of the stage and add a lot more light, a lot more illumination, a lot more brightness to the evening, because we can see और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप सब भी एकदम बिल्कुल अच्छी एनर्जी और खुशी के साथ तैयार हैं। Lamp lighting ceremony, please. Beautiful. With that applause, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for adding the light, the illumination, the happiness, and definitely the energy for the evening. इसी शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम सब जानते हैं इंडिया वॉइस फेस्ट एक ऐसा सपना जो बहुत सालों पहले
एक इंसान ने देखा था, देखते आ रहे थे, सपना एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, जब आंखें बंद थी तब आया, उसके बाद वो सपना आंखें खुले रही तब भी आता रहा। अब ऐसे सपने को अगर वो कंक्लूड न करें या उसे रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करें तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। एंड दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रीम, द फॉर्मेशन, the ideation, the creation, and put all that put together. There is only one name and one person. He's just silently, humbly walking past me right into the wings of the stage. But ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. More than 2 decades in the industry, the voice of voices, the art, the talent, the craft, the technology, and all that put together. There are not many people who have so many talents all together, and that too with the zest, the energy, and the enthusiasm that we would have ever seen in a voice artist. I would like to call upon stage none other than the curator of India Voice Fest, Darpan Mehta. Thank you, Hemang. Thank you, everyone, for coming out on a Sunday evening. और 6 दिन से शाम को 6 से 9 बजे तक बक करता आ रहा हूँ. And now I am at an absolute loss for words. So it is very exhilarating and very rewarding to see so many of the industry's finest talents here today. And I think many more will join in the hours to come. And I can only say a big thank you. इस बार हमने जब शुरुआत की थी तब we decided that the tagline for this year will be India Voice Fest 2022, आवाज़ें फिर मिलेंगी. And देखिए ये सपना सच हो गया. 3 साल बाद हम सब मिल रहे हैं. पर अगर कोई मुझसे पूछे कि what is my measure of the real success of India Voice Fest, the measure of success for this event is not, and please excuse me, is not the stalwarts who are joining in, is not the veterans who are joining in. The real measure of success is देश के कोने कोने से, शहरों से, छोटे शहरों से, छोटे इलाकों से लोग जो जुड़े हैं इंडिया वॉइस फेस्ट से. और सबसे बड़ा थैंक यू मैं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप में से उन लोगों को कहना चाहता हूं जो बंबई के बाहर से, देश के अलग अलग कोनों से आज इस कार्यक्रम में आए हैं. थैंक यू सो मच. आपने बहुत बड़ा काम किया है. मैं इस इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ है और मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूं कि हम कितनी मुश्किल होती है यहाँ पर बंबई में रहने वाले आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को भी एक दूसरे से मिलने में. आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस विल एग्री. सालों निकल जाते हैं, बड़ा आइसोलेटेड सा काम होता है, स्टूडियोज में लोग अपना काम करके चले जाते हैं. ऐसे में एक ऐसा मंच जिसने आपके दिल में ऐसी जगह बना ली है कि आप हजारों किलोमीटर दूर से आज बंबई आए हैं, इतना रुपया, इतना वक्त खर्च करके, क्योंकि आपकी भी आंखों में तारे हैं, सितारे हैं, अरमान है कि आपको इस इंडस्ट्री का, इस कला का हिस्सा बनना है, और आपने इतना बड़ा कदम उठाया. तो मेरे लिए इस इंक्लूसिविटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है. आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस इज दैट वी हैव क्रॉस्ड ऑल बाउंड्रीज ऑफ सिटी, स्टेट, लैंग्वेज, एज, जेंडर. कितने लोग मिल रहे हैं बाहर जो कहां से आए हैं. I want to say a big thank you once again to all of you, and then obviously a big thank you to all my friends and colleagues who have always loved me and supported this initiative, and thank you to our elders, to the stalwarts who are here. And I think as an industry ये हमारा फर्ज बनता है कि वो लोग जिन्होंने इस काम किया, इस इंडस्ट्री की नींव रखी है, उस नींव, उस स्तंभ को हम उसका सब सम्मान करें, सत्कार करें. So thank you everyone. I won't take any more time. Already हम थोड़ा सा, we have very limited time today. 4 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम है. उसके बाद में 8 बजे we're supposed to go up to the 3rd floor on the rooftop and not talk work and just network and chill and have food and dance and party. So इस वक्त today the agenda, the primary agenda is the India Voice Fest Awards. We have more than 35 awards being presented today across multiple categories. This is a first for the country where any individual can present his or her work as a voice talent. Uske alawa, we have the grand finale of the Voice Talent Hunt, which is an element very close to my heart with India Voice Fest. And then we also have some very special
felicitations of our stalwarts, and we have some very special guests with whom we will have a chat on stage. क्योंकि काफी सारे sessions तो हमने online कर लिए हैं, and you've loved them, and I loved. I don't know if you loved them, but I loved being in those sessions every evening. So today is the time to meet in person to celebrate this craft. And another very special thing today is a lot of these segments will be hosted by some of the leading veteran voice talents of the industry. That also makes this program absolutely by the voice artists, for the voice artists, and of the voice artists. So thank you again, everyone. And I'm going to now, again, thank you, Hemang. Hemang is an absolute sweetheart, and he is going to be the host for the day. Please show some love to Hemang Sharma. Thank you. थैंक यू सो मच। जब दर्पण बात करना शुरू करते हैं तो फिर हमें ऐसे लगता है कि बस हम सुनते ही रहें, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आई थिंक हम सब जब एक आवाज़ के क्षेत्र से मिले हैं तो आज की खास जो शाम है वो आवाज़ों के लिए ही है और आवाज़ों को रिकग्नाइज करने के लिए है। परंतु रिकग्नाइज जब हम करने जाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? अवार्ड्स इज वन ऑफ देम। And when we talk about an award, you know, something like this, which I have just placed here on stage, it becomes the center of attraction. It has a pull of its own. It has a desire that many people want to fulfill, want to catch, want to grab. And somewhere there, आप फिलहाल तैयार हो जाएं कि जब हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो कहाँ तक पहुँचते हैं। आवाज़ चलते चलते मैं बढ़ रहा हूँ आगे और बता रहा हूँ कि किस तरह से अवार्ड्स की खासियत क्या होती। और अवार्ड्स के लिए जब हम मेहनत करते हैं उस मेहनत में हमें पता चलता है दैट इट्स वेरी 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 चैलेंजिंग, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये डिफिकल्टी एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग संभालते हैं, और इस मुश्किल को संभालते हुए हमें ये मानना होगा कि जब अवार्ड्स में से सिलेक्शन करना होता है और इतने सारे कलाकार एक साथ आ जाते हैं तो जो समय, ध्यान, इवैल्यूएशन, सोच और उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस करने में जो गहन और इन डेप्थ और इंट्रिकेट ऑब्जर्वेशंस चाहिए, उसमें जब दिग्गज मिलते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव से आवाज़ों को इवैल्यूएट करते हैं तब जाके ये अवार्ड्स जैसे कलाकार हमें मिलते हैं। बट देन अगेन there's so much more that goes behind the scene. And वो behind the scene के लिए I would love you to know the jury for the India Voice Fest Awards. और मैं चाहूँगा कि आप सब इन जूरी से रूबरू हों और हम चाहेंगे कि हम उन्हें acknowledge करें. For that, I will read out the names who have been on the jury panel for the India Voice Fest Awards, and I would love them to please come on stage so that we can share our gratitude with them. Do we have Mr. Aditya Mehta here, the founder of SudeepAudio.com? If you're around, please come on stage. Mr. Abhishek Datta, the Associate Vice President, Acquisitions and Programming of Viacom 18. Do we have Sean DeCosta, the dubbing manager for Warner Brothers Discovery? We would like to have Anirbandeep Datta also on stage, the creative director for Pixel and Ratio. We would love to have Mohan Gopinath, the business head, Bollywood Shemaru. We would love to also have Ravi Agrawal to please come on stage and join us. He's the programming head for Z Biscope. Rahul Patil, sir, if you're around, please join us. He's the Associate Director, Production, Audible India. We have Eliza Lewis with here. If she's around, please come on stage. The founder of Mainframe Software Communications. Mona Shetty, ma'am, is going to arrive a little later in the evening. She's the president of Sound and Vision India. Rajshri Sharma, the director of Audio Magic. Rama Medyanathan, the speech, language, and voice pathologist. Yes, you please around. We would love to have you on stage as well. Mr. Vishesh Jain, the senior creative director. Would, if you're around, please join us on stage. Also, Mr. Rohit Pradhan, the sound designer, founder, Mixbox Studios, and Mr. Mayur Puri, the writer, the lyricist, the filmmaker, and localization expert. Lots of time and effort has gone through that. Many of them have not reached as of now, so no worries. We acknowledge, we love to appreciate, and also share that
effort, the time, the enthusiasm, and the kind of work. We would like to have a photo op, please. Can you just get a little closer, right to the center of the stage? Here's the camera. Let us capture this moment, which is so valuable to us. Thank you so much. That was the jury for the India Voice Fest Awards this year. And as the jury goes off stage, I would request Darpan Mehta to please take the mic and take over. So guys, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हमारे चहीते राजेश कावा ने बनाया है और ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया वॉइस फेस्ट अवार्ड्स की ट्रॉफी है, मेमेंटो है. एंड इन जस्ट अ मोमेंट many of us are going to show you why our heart beats for India Voice Fest Awards and why the India Voice Fest Awards are the ultimate aspiration for any voice artist. So give us just 10 seconds and get ready for something fun. तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल. तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल. इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह. तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना. तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है. तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है. तू मेरी जिंदगी है. मेरे नसीब में तू नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ तेरे. ये हम क्या जाने, ये वही जाने, इसने लिखा है सबका तुझ में रब दिखता है, क्या करूं. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. ऐसी क्या चली हवा कि ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर. तेरे पास और मुझे हुआ एहसास. तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में
से जियो आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे इन सांसों में फंस जा कहीं बदल न जाना सनम मैंने वादा किया धरती जब तक रहेगी अमर तब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ सांसी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं साथ जन्म तक साथ जन्म नहीं जन्म Now that's what calls for a super performance, super talent, super energy. Here's the mic over to you. Guys, put your hands together for the man behind this mind-boggling concept, the one and only Rajesh Kar. Once more. देखो भाई इतने में Thank you, everyone. Bye, everyone. Let's have yourself. Now that is what to call the energy start of the day. मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर आपके चेहरों पे मुस्कुराहट के साथ और भी एनकरेजमेंट आ गई है. इतने इतने दिग्गज कलाकार अगर इन अवार्ड्स के लिए वाई कर रहे हैं, then we definitely have to work a lot towards it, no doubt. But मेहनत जारी रहेगी और कोशिश भी जारी रहेगी और इसे हम अवार्ड सेरेमनी भी शुरू करना जारी रखते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है. हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारे अवार्ड्स हम शेयर करें और खुशियां मनाएं. और इसीलिए सबसे पहला सेगमेंट जो मैं दरख्वास्त करूंगा आके होस्ट करे वो एक ऐसी कलाकार है who is India's most loved voice artist. She's versatile, she is so supremely talented, and the voices, the characters and the people that she has enticed is unlimited. बस हो गया ना, नाम बता देता हूं बेहतर रहेगा. The name is none other than Meghna Irande. I would love you to please take over. Thank you so much. Hi, hello, नमस्कार. मैं हूँ मेघना, आप सबकी दोस्त और इस सेगमेंट की होस्ट. सो ये स्पेशली मुझे दिया गया है सेगमेंट. ये कौन सा सेगमेंट है आपने बताना है. कोई बता सकता है? ओके, आई परफॉर्म, फिर आप बताओ कौन सा है. You're my honey bun, sugar plum, hunky. You're my sweetie pie. You're my cupcake, gumdrops, make a bria. The apple of my eye. Thank you.
चाइल्ड वॉइस अवार्ड की ये कैटेगरी है, उसके लिए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ फरजान दस्तूर जी. प्लीज कम अप ऑन द स्टेज. सो कैसा लग रहा है आपको कि आप चाइल्ड वॉइस अवार्ड देने के लिए यहाँ पे आए हो? ये काश इंडिया वॉइस फेस्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड हुआ होता तो मुझे भी अवार्ड मिल जाता. इतना स्पेशल अवार्ड है, ऑस्कर नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए. अभी इतना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस आप सबने किया है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल इवेंट टू बी हियर. आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और यहाँ पे कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बचपन में ही स्टार्ट किया है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. एंड फॉर द लवली ऑडियंस, सो अनाउंस करें. आर यू रेडी? आवाज नहीं आ रही. आर यू रेडी? चाइल्ड वॉइस टीवी कमर्शियल हिंदी फीमेल. And the winner is Araina Adityanand. Congratulations for Advent Father's Day. जोरदार तालियां रायना के लिए. Thank you. Next award, Child Voice TV Commercial Hindi Male. And the winner is Arman Malik for Ashirwad Select Multigrain Atta. Super cute and super naughty. Congratulations. Child voice dubbing, live action Hindi. And the winner is Om Pramod Salunke for Stranger Things. And this is the last award in child category. Child voice dubbing animation Hindi. And the winner is Aditya Pednekar for Tarak Mehta Ka Chhota Chashma. Thank you, Farzanji. Thank you, Darpanji. Meghna, thank you so much. Meghna Irande, everyone, put your hands together. The industry sweetheart, Meghna Irande. With this, we'll go ahead with the awards, but awards के साथ साथ और भी कुछ खास है जो आपके साथ share करना है. If you take a look at that end of the stage and you can see a table there and there are some things that are kept on the table. ये क्या है, क्यों है और इसका process क्या है, उसके लिए हम आपसे 45 सेकंड से 1 मिनट तक का समय मांगेंगे, जिसके लिए मैं बुला रहा हूँ संकेत मात्रे को. एंड इनकी आवाज में जब आप सुनेंगे तो आपके जहन तक बैठ जाएगा. आइए संकेत, on to the stage, over to you. Good evening, everybody.
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया शुगर मीडिया, सभी स्पॉन्सर्स का, दर्पण का, हमें इनवाइट करने के लिए। 2 साल के बाद आवाज़ें फिर मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ देख के। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट हैं जिनके कामों का ये एक मेमेंटो है। कुछ एक्शन फिगर्स हैं, कुछ ग्राफिक नॉवेल्स हैं, कुछ पोस्टर्स हैं। ये एक साइलेंट बिड होगा। यहाँ पर सारे आइटम्स की एक मिनिमम वैल्यू लिखी होगी और वहाँ पे नोट पैड पेन होगा। आप अपनी वैल्यू या अपना बिड लिखकर एक एनवेलप में डाल सकते हैं। सबसे आखिर में, दिन के आखिर में, जब बिड्स खोली जाएंगी और हम फिगर आउट करेंगे कि सबसे हाईएस्ट बिड किसकी है, उस आर्टिस्ट को स्टेज पर बुलाया जाएगा और वो अपने हाथों से ऑटोग्राफ करके जो भी हाईएस्ट बिडर हैं उन्हें वो मेमेंटो देंगे और ये सारी जो राशि यहाँ जमा होगी वो हम एक सोशल कॉज को डोनेट करने वाले हैं इंडिया वॉइस फेस्टिवल। थैंक यू सो मच। जब भी मौका मिले, look at the items. If there's something you like, place your silent bid and hopefully you'll be the winner at the end of the night. Thank you so much, guys. Enjoy your evening. Thank you. थैंक यू संकेत। एंड संकेत ने मुझे संकेत दे दिया है कि बस हम आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं एक खास समय के पास जहां पर हम आपको दिग्गज कलाकारों से मिलाना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करना चाहते हैं। और उसी प्रोसेस में मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिसेस मीरा जगन्नाथ जी से कि आप स्टेज पर आए। मिसेस मीरा जगन्नाथ जी, आप यहाँ पर हैं, वी वुड लव यू टू बी ऑन स्टेज। Meera Jagannath has been an integral part of the voice industry for 40 years, especially as a Tamil language voice artist. Her major dubbing projects include, in recent times, feature films like Bajirao Mastani, where she dubbed for the important character of Tanvi Azmi in Tamil, and Thugs of Hindustan, where she dubbed for Ila Arun in Tamil. Presently, she has lent her voice for elderly characters in TV commercials, recent ones being Cadbury's, Dr. Morpin, Glucose Monitor, and she has also modeled in TVCs like Havells Water Purifier, Paytm Gold, Dabur Chyawanprash, PhonePe Insurance. We are honored and delighted to facilitate Jai Meera Jagannath for her achievements as an artist and her invaluable contribution to the Indian voice industry. Sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. This has really graced the occasion. Wow, I just got the blessings. It feels like I have an energy flowing through my nerves right now, and that is awesome. And I'm going to start speaking Tamil immediately. Inshallah. Touch wood. Wow, with those blessings, it is time to go to the next category of the awards. And for handing out and hosting the next segment, I would request Amrinder Singh to be here on stage. But Filhal, Anji Dusuddo. Ado, it's all yours. The stage is all yours. And with his energy and his talent, I don't really have to introduce him much. Here's the mic. I'll get you the cue card. Thank you so much. How's the Josh? Is the voice industry sitting under this roof? How's the Josh? That's more like it. So can I do Bhangra in the meantime by the time this comes? I can do it. Only if Darpan allows. Okay, ladies and gentlemen, can I have the pleasure to call upon stage Abhishek Datta?
Abhishek Datta. Please come on stage. जोरदार तालियां अभिषेक दत्ता के लिए. The category for which this award is going, it's documentary narration Hindi, and I would like Abhishek Datta to announce the name, please. So the award for documentary narration Hindi, and the winner is one of my favorites, Neshma Chemburkar for Secrets of Playboy. Neshma. Friends, तालियां हो जाए जोरदार. She's a very own Neshma Chemburkar. Neshma also has to dance. This award is not for free. You have to dance. Right? Lovely. Thank you so much. तो इन्होंने इस अवार्ड की भूमिका पहले से बांध दी थी यहाँ पे डांस करके. Okay, friends. The next category is digital film voice Hindi, and I want Abhishek Datta to do the needful. And the winner is Mr. Viraj Adhav for Unacademy. And the project for which he's receiving this award is Unacademy. Guys, जोरदार तालियां. Without dance, you cannot receive this award, Viraj. तालियां. मैं अपने कोलीग्स के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि फोटो खिंचवानी भूल जाता हूँ. Thank you, Viraj, and congratulations. And the next category is digital film voice English. And the winner is Nishit Dhanak for Realme. Is Nishit Dhanak here? I guess he's not made it. हम तो मिलने हैं कर रहे. Can anyone come on stage and collect this award on behalf of Nishit? Okay, we have Nimisha here. Nimisha will take the commission from Nishit for collecting the award. Zoda Taliya. Nimisha, get ready to dance again. You already done that once today. Let's play something danger. जोरदार तालियां निशित धनक के लिए. और शेखर एक. We have to shake a leg before you get down. Okay, she's too busy right now. Okay, we'll move on to the next category. It's, by the way, Nishit Dhanak won this award for Project Yalm. The next category is digital commercial voice Hindi, and the winner is. And the winner is Christina Andrew for Purple. Christina Andrew, is she in the house? Can somebody else come on our behalf? It's for the Project Purple. Guys, Zoda Taria, Rajvi Sharma.
Let's shake a leg. That's it. Thank you, Abhishek Datta. Thank you so much. Thank you. Okay, to announce the next categories, can I have Mohan, Gopinath, and Rohit Pradhan on stage, please? Just to inform all of you, Mohan is business head of Shimaru, and Rohit Pradhan is a wonderful sound designer and founder of Mixbox Studios. And Mohan and Rohit have been on the jury of the awards this year. Thank you. Okay, friends, we have our next category, which is Digital Commercial Voice English Female. And a winner. No, I'm not going to do that. I've called two gentlemen here on stage. And the winner is Nimisha Sirohi for Platinum Ivana. Nimisha, this time you'll be coming to collect your own award and not on behalf of somebody. आलिया बचती रहे, अब तो डांस करना पड़ेगा, गुजराती के बाद. आलिया गाइस एवरीवन, आलिया बचती रहनी चाहिए. बहुत मेहनत के बाद हमें मिलता है और ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन का काम करता है. So let's listen. And the next category is Digital Commercial Voice English Male. मनीष डोगर दिवे. Manish Dogadev is there, and it's for the project Happiness Hub. Then Manish raise his hand. Is Manish around? विनोद दादा, आपसे गुजारिश है कि आप मनीष के बिहाफ पर के अवार्ड कलेक्ट करें. जोरदार तालियां विनोद कुलकर्णी जी, हमारे इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड, आप सभी ये जानते हैं. Manish Dogadev for the project Happiness Hub. And the next category is Digital Film Voice Hindi, and the award goes to again one of my favorite, my dear friend. Any guesses? And the winner is Okay, there are always group ups. There are no retakes. I'll take rest of the categories, guys. Thanks so much. I will get too excited to forget that all the categories I've been assigned for are over. So please excuse me. Thank you so much, Abhishek. Thank you all. Thank you so very much. I'll hand over the mic to someone else. Thank you. Amrinder. Like when we talk about a personality like him, yes, exactly. Put your hands together for Amrinder Sodhi. He's a person who stands up for the fraternity without the blink of an eye. He's been a person who's been running for the causes of the voice industry and has been putting in a lot of energy altogether. I guess the mic should be there.
So Amrinder is a very special voice. Not only is he a fantastic voice artist, but as the General Secretary of the Association of Voice Artists, Amrinder is always a call away for anyone who needs help. And in the last couple of years, especially since the time he has actively taken upon the role of General Secretary, Amrinder has earned so much love and so much respect from artists that it is difficult to, for anyone to understand that. So please, ladies and gentlemen, this is a true artist who goes beyond his line of duty and goes out of his way to help his fellow artists. Thank you, Amrinder. Thank you. Yes, with that applause, and I guess you maintain the energy of the applause as well. जब भी पा रहे हैं बस इसी तरह से हम आगे और भी प्यार बढ़ाएं. But while the love continues, there is a lot of impetus that is brought in by people who have been supporting the team India Voice Fest. And when it comes to the support, it's not just one, it's each one of us who's sitting here, who's been a part of the family online, who has been sponsoring the events, and at the same time, making sure that the gusto is maintained. And in that process, I would like to take the opportunity to invite on stage the associate sponsor, Audio Magic, and the names that I would like to call upon stage would be Rajeshri and Tarun Sharma to kindly come on stage, hands together, for the talent, the energy, and the support that they have been giving over the years. We would request you to kindly stay back on stage for a second. There is something very important and special we would like to also share. Here is the opportunity for us to share a special award, a memorial award. And for that, I would request Darpan sir to please take the name, because such an important award here. And for that, over. So last year, we started the Shri B.N. Sharma Memorial Award in memory of Sharma ji himself, an acclaimed recordist and the founder of the company. And this year, we've chosen Varun Keer from Audio Magic to be presented the Shri B.N. Sharma Memorial Award. Can we have Varun on the stage, please? Varun, that's the push, that's the energy. We love that and appreciate that. The B.N. Sharma Memorial Award given to Varun Keer right here. It is very rare to hear Tarun speak on the mic on stage. So I have cornered him today. Thank you everyone. Generally, I'm behind I'm away from the microphone. I keep on recording. Thank you everyone for coming here, supporting this event. This is a very huge event. Thank you. I know almost everyone. Thank you very much for coming here. Thank you. देखो ये बोलने की कला होती है. अगली बार ऑडिशन में जब आप जाएंगे तो हम आपको बोलेंगे, जब आप ऑडियो मैजिक में ऑडिशन में आएंगे आपको कहा जाएगा थैंक यू को 8 अंदाज में बोलिए, और अगर आपने 8 अंदाज में बोल दिया तरुण खुद आपको सिलेक्ट करके आपको रिकॉर्ड करेंगे. ये जितनी बार भी नहीं बोले सारे थैंक यू एक साथ बोल दिए.
That was great. But on a serious note, Rajshri and Tarun, you guys they've been very, very supportive of India Voice Fest, of the initiative, very loving towards me. And this is a very small token of our appreciation, but the love and affection and respect that all of us at Sugar Medias and India Voice Fest have for the Audio Magic team is very deep. So thank you once again. Thank you. Oh, this is mutual. Thank you so much, Darpan, for so much love again. And we are happy we are able to support this event. Thank you. Thank you. Thanks a lot. And congratulations. This takes us to the next opportunity for us to get an insight into creativity, get an insight into the minds of people who create the magic when it comes to the voice industry and more. And for that, we have a personality amongst us. We would like him to please join us on stage. Here's going to be a short little conversation between Darpan Mehta and the personality, the name of which is Bodhayan Mukherjee. We would like to request Bodhayan Mukherjee ji to please join us on stage for a quick chat with Darpan sir. Bodhayan Mukherjee, fondly known as Buddy by everyone in the industry, is one of the path breakers in Indian advertising filmmaking. A Cannes Lion winner, a national award winner, his company has produced more than 600 commercials for leading brands like Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola, Nokia, among others. 2010 is the year when Bodhayan directed the Bell Bajao, the Ring the Bell campaign against domestic violence for Breakthrough, which went on to win the prestigious, round of applause, Silver Lion at Cannes. The Shower, his much acclaimed film for Unilever, won him the prestigious, again applause, National Award in 2021. As an advertising filmmaker, he has great respect for the craft of voice acting and has worked with some of the best voice talents in the industry. It is our absolute delight and honor to have, let me say the word and the casual term, Buddy Tully on stage with us today on India Voice Fest. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Buddy. And once again, a very warm welcome to India Voice Fest from all of us. Ladies and gentlemen, Buddy is not just a name in advertising. Buddy is, in fact, a hallowed name. A very, very well-respected filmmaker, director, producer, founder of Little Lamb Films. And what makes it very special for me is that it was an absolute dream for me to even connect with him. I had no connection with Buddy. And look at the magnanimity of the guy that I sent him just a LinkedIn message. And it was a cold message, hoping that he just might even read it. And 5-7 minutes, I see his reply, not only showing interest, but look at the humility of the person that he said that I want to be there to express my gratitude to the role voiceover artists have played in my journey as a filmmaker. Today we are here to chat with Buddy about his perspective on voice acting, especially about his own experiences with voiceover artists, and he's also going to reveal a lesser known secret about another facet of his personality of being a voice artist. Buddy, over to you. No, to begin with, thank you so much. I think it has been an absolute honor and pleasure to be here. When Darpan had sent me that LinkedIn message, I could never imagine myself sitting in front of all of you. A lot of you I know personally, and you have had the pleasure or the pain of being with me in a studio. So thank you so much, Darpan. I think this entire effort, I was just telling Vinod that we as filmmakers have not been able to manage to do this. As an association, we have failed to have an award for ad filmmakers, and look at all of you. I think it's an honor and privilege to be here. And thank you so much, Darpan and team. This means a lot, because it's an award is also validation, recognition, and often that kick at the backside to move ahead, possibly with something better for the future. So thank you so much, Sugar Medias and everyone here. Yeah, let's begin. We don't want to bore you, and that's something which I've been telling Darpan for a long time. Darpan, let's not bore people. So the moment you start getting bored, start standing up.
and we promised to stop. So that's something we will definitely do. Let's see God Jordan come back. And I remember those who have stood up. So that's the other thing. Like, Yeah, absolutely. So, buddy, on that note, I think the first question that I want to ask you is to ensure that we don't bore anyone. What is this one thing about voice artists that is your pet peeve that irritates you the most as a filmmaker? Oh, damn. No, so I was, to begin with, this was both ways. I have had sessions where, so my post-producer Sushant is also here. Sushant, we're here, right? So Sushant is also here. I often come out of the studio and ask, where is she or where is he? So that has always been something where I am running around the clock and we have scheduled, say, 8 voices to be dubbed the whole day. And when I suddenly come out and ask Sushant, come on, do some recordings here. So that is something which has always bothered me, but then similarly, it has been a number of times that I have made people wait. And all of you are absolutely pointing to it. I have made people wait. And wait to the extent we have cancelled booking and said, Kal aaja. So again, it works both ways. It's not a beef per se, but I would say, ho jata hai. Very fair. The other thing that I wanted to ask you, which I think very few people know, even people who work with you, is his experiences as a voice. People know him as a director, as an ace director, as a filmmaker, but not many people know that in the early years of his life, of his career, he's also been a prolific voice artist. So why don't you tell us about that? I don't think I can use the word process. So before that, there's a small thing which, anyway, I think we'll come to the prolific part. I used to work in an organization called Production House called Black Magic. I think there's some of you here must have worked with Black Magic in those days, and Dadu and Arjun. I used to assist Dadu and Arjun at some point in time. Later on, I became their partner. Black Magic's first feature film was a Bengali feature called Patal Gaur, called The Underground Chamber. So Patal Gaur had, and I was the executive producer and also the casting director, and I casted Joyce Gupta as that was his first Bengali feature. Dadu won the national award for that. Just for your information. So while we were shooting, and this is something which has occurred to me many a times. I have shot, I remember voice artists when I'm shooting. I'll come to that later. So while we were shooting Patal Gaur and Joy was being directed by Dadu, Joy unfortunately was born and brought up in Delhi. And we Bengalis who are from Kolkata, we have this Puritan approach towards the language. We often don't like people from Sia Park. So we often say that ye log Bengali nahi. So when Joy started talking, Dadu looks at me and says, "What language is he speaking?" I said, "Bengali." So Dadu said that, "Boss, ye to dub karna padega bhai." So those days I had not become bunny. I was still both Thai. So Dadu said that we'll have to dub. So while we were looking for dubbing artists, Dadu said that why don't you try? Since you know the script in and out and you know the nuances of the character, why don't you try? And I said, at your risk, I can go in. So that's the day I realized that, and there are a lot of dubbing directors here, with no offense meant to anyone, the credit of a good dub has to go to the director who is directing it, not necessarily to the artist. And I'm talking from my experience. So Joyce Gupta's voice in Patal Gaur is mine.
So the film begins with me and ends with my voice, and every single time there was a screening, all my junior ADs in Blackmagic used to say, we can't stand to hear you for 2.5 hours. So they used to walk out primarily because it was my voice from the beginning to the end. So the credit of the dub has to go to Dadu because he made me dub it. And so then when I made my first feature, Pink Kamu, and Pamela is here, Pamela dubbed for it, where Joy's voice again I dubbed. It almost came as a memory of, since it's Joy, I thought, oh, damn, I have to dub it. So I dubbed it. And yeah, so that's the two features I have dubbed. Advertising में तो खुद का फिल्म में माइक के सामने जाना ही पड़ता है. There's no two ways. I've rarely done in all those 600 films that I've directed, I've rarely not gone in front of the mic. वो करना पड़ता है मजबूरन, also to save money. So ये तो गलत बात है. अब आप लोग हिसाब लगाओ 600 films कितना पैसा बचाया गया है. No, but I obviously understand he's joking because he works with some of the finest voice talents in the country. So, Buddy, when you are working with a voice, especially since you come from the advertising space, and in general, dharana ye hai that advertising is a very ruthless space. It is very difficult to get your foot in the door in advertising as a voiceover artist, and ad filmmakers get very comfortable with working with the same set of people. And here we are at a platform where there are so many budding, aspiring artists. Everyone has the right to dream, to be up there. So as a filmmaker, what would you advise them? What is it that they should work on? What are the qualities that they should develop, inculcate to make the cut for a film directed by Buddy? Take down Sushant's number. That's the most important thing. Sushant, abhi kare nikal lo. So, no, I don't think I'm qualified to even talk on that. But whatever little I have learned in life is that, see, there are two types of voices that I would always require. One is the voices who will enact the characters, and the other will be a voiceover, who possibly comes in the product window section, who can be a sutradhar. So there are two different types of voices, and for every film, we keep requiring both types of voices. One would be the voiceover artist, Hindi, Bangla, English, whatever, and actors. Now, what Darpan has said is true, is that we often get very extremely comfortable. Because ये जो एक word है ना, I've also learned it from agencies who tell us that वो director के साथ में हम लोग का comfort level अच्छा है. So automatically I will never get into that agency because there are agencies who have a comfort level with the director. The same thing applies to me when I'm working with a particular DOP. The comfort level with the DOP is like it's a husband-wife relationship. That's a different thing altogether. Comfort level ho jata hai dar, but I will be possibly bluffing myself if I say that comfortable nahi hota hai. So if there's some of you here who constantly keeps working with me, you must be. The answer is yes, the comfort level for sure. But at the same time, what I keep telling Sushant is that, and I do that. On a particular film, I will always tell him that I do not want to hear him or her again. Enough. Over the last 1 month, they also get extremely comfortable. अच्छा ये film है, ये character है, but उसको बुला लो, and I am into multiple projects. I'm not putting my thought behind voice casting. So they also get comfortable. They also call the same people, which I don't think is right. Only when I will finally put my foot down and say that I don't want to hear the same voice. Get me a young 20s, young voice. Then that's when
you need to talk to Sushant. Call him up, send him emails, send your voice samples and stuff. And believe me, I'm absolutely open to voice cast new voices. And that always works for me. Always. I think you put out a very, very important point about a director's perspective on wanting to work with voices, that either you are the character or you are the voiceover or the sutradhar, whatever you say. So, and coming from a celebrated filmmaker like Buddy, like he said, he's always open to working with new voices. So I think after this session, you should look for Sushant. So, Buddy, what do you have to say about a platform like this? I'm sure इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ that you heard of a voiceover artists की conference or awards. What is it that you think can be done? What more can be done? Do you have any thoughts on that? So to begin with, I think where you started from and where you have reached today, the first time I'm getting associated with a platform like this, it's outstanding. It's absolutely outstanding. I'll repeat myself, an award is not only just to come on stage and get it. It's also an impetus to do better work. And for those who don't win tonight, it's also coming back with a better voice, better understanding. And I always wonder, and this is something which I have told myself, is whenever I don't win, there must be a reason why I have not won. So it's also important to figure out why I have not won. What is it that someone else has done which is better? At the same time, I will also not discourage people. Finally, a jury's decision is also about what people have decided. Those few people have decided. If the jury was different, the decisions possibly would have also been different. So I think at the end of it, it's important to have a platform like this, just to tell people that we are one. This oneness, as I was telling Vinod, that ये oneness at filmmakers में नहीं है, and I'm extremely sorry for that. I feel sorry. I remember the last time the IFA happened. IFA used to be our Indian Advertising Filmmakers Award. Was in 1999. IFA happened in 1999. That was the last time IFA happened, and Chetan Shashital won for the film that he dubbed for us. I still remember that. Post that, there's nothing, no platform for ad filmmakers in India. I'm so glad that what you are doing, I think it's phenomenal. There's scope of improvement. That's an offline discussion. Once you have me here, I will also think and tell you what absolutely more. Absolutely. But one thing which I would have loved to do is to see the films that won. I think I was missing it. Sitting on the front row, I was just hoping that while people were coming up and no, you have a very valid point. I would have loved to see them more than anybody else. But then, so that is again a matter of an offline discussion. But online, on stage, I can say that we had major copyright concerns because of which we did not feel it was a risk worth taking or to go through the absolutely unrequired trouble. We do not have the bandwidth to handle that. I'm hoping that a time comes, in times to come, when many platforms and many other players start supporting it, so that we do not have to worry about. We're living in very different times now, buddy. I'm sure you will agree with me. We're living in very, very different times. Sometimes difficult, sometimes weird, sometimes beautiful. But copyright has become such a huge thing that a lot of work, especially the dubbing work, that has been rewarded, awarded, or recognized. So most of the artists do not have the right to even present that work. It's almost like an underground thing that we're doing. It only goes to the jury, and it comes, and then we have the marks being given. We don't right now have the bandwidth to understand the implications
of playing out that work on screen right now. But I'm hoping, so this is a very, very valid concern. No, so on that, I have a small thing to add, and this is something we as filmmakers do. And if this can be translated to the voice artist community, it can also work. Whenever we enter our films for the awards, at the end of it, always remember that the films that we are making, we generally do not own the copyright. It is with the client. So what we do is whenever there's an award ceremony and we enter, we would always send a mail back to the client saying that we are entering, we need an NOC from you. So that NOC comes from the client, and only then shall my entry become valid. But if you do that, buddy, I would have to wait for the next 100 years. Unfortunately, that's the reality. You understand the voice industry is huge today. True. So advertising is only one part of it. There's dubbing, audiobook, corporate films, narration, podcasts. There's so much happening, and the layers to reach the client, to reach the owner of that content are so many that as a freelance voice artist, we do not have a voice. So the whole idea of a platform like this, buddy, is so that over the years, every year we have people, very distinguished people coming in. So today you are here. I'm hoping that you will go back and talk to your friends. So we have some representatives of platforms who've joined us over the last few years. They've started now noticing this movement. So in times to come, जैसा हिंदी में कहते हैं कि धीरे-धीरे हवा बदलेगी, और जैसे-जैसे हवा बदलेगी, and we will get that distinctive individual standing where a voice artist can get an NOC from a streaming player. That day, I'm sure things will be different. But you have a very valid point, and I respect that. Absolutely. Completely valid point. Advertising is a small part of a bigger picture. But for advertising, if anyone wants to get an NOC, it's easy. Uttam, definitely I can say. It's an easier process because clients are aware of awards and they are very thrilled when their films also win. So, of course, I think we have a long way to go. क्योंकि let's not forget कि हम freelance artists हैं और कहीं ना कहीं हम अपना वजूद या अपनी identity as independent professionals, we are trying to establish that. पैसा बहुत है industry में, पर I'm sure all of you will agree that when it comes to a sense of ownership, sense of belonging, we're still a long way. But I think support from stalwarts like you will go a long way in years to come. So on this stage, I'm going to request that in the years to come, we get your kind counsel, your advice, your support, so that we can collectively strengthen this platform. as I told you, once I'm here, you have me. Splendid. So, thank you. Thank you, buddy. Ladies and gentlemen, Bodhan Mukherjee, one of India's most celebrated ad filmmakers, and like he told you, Sushant ka number milena. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. I would rather play Damshara. India Voice Fest 2022 is happening. I just can't believe it. You know, those years of COVID, which was so challenging. And कभी ऐसा लग रहा था कि जब मुलाकात होगी, एक मुलाकात जरूरी है, सनम वाली सिचुएशन आ गई थी, मैं तो पूरा गाना गा लेता, मगर शुक्र है वो खत्म हुआ और हम आज यहाँ मिल रहे हैं. और जब से हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर, मगर अगले सेगमेंट के लिए I would like to call upon another artist, a voice artist, a multi-talented voice artist, multi-award-winning artist. इतनी multi-award-winning artist के धमाके हो रहे हैं स्पीकर में से, खुद ही मैंने कुछ नहीं किया. So now you pretty much have an idea of who's coming on stage. You don't have, obviously you don't. I would like to tell you that. But before that, is that a green signal? Are we already backstage? Okay, so I would like to call on stage
Nimisha Sirohi to handle the next segment of the award and let us know where it would go. Hello. Hi everyone. A very warm welcome to each and every one of you over here. Thank you for taking out the time and effort to come to this wonderful celebration of the Indian voicing industry. So thank you India Voice Fest, Darpan Mehta, Kiran, the team, the sponsors and all the co-artists for being here. I'm going to start off by inviting the legend Arvind Mehta on the stage. Arvind Mehra on stage to give out the award for Dubbing Voice Animation Series Hindi Female. दर्पण को बहुत बहुत बधाई, इतना बेहतरीन काम कर रहा है. Congratulations दर्पण, keep it up. और पूरी इंडस्ट्री आज जमा है, मुझे इतना अच्छा लगा. अब ये अवार्ड डबिंग वॉइस एनिमेशन सीरीज हिंदी फीमेल एंड विनर इज माय फेवरेट मेघना एरंगे. मेघना, वेलकम. You to give the next award for dubbing voice animation series Hindi Male. Wow, this is good. सारे मेरे पसंदीदा कलाकार, मेरे अजीज. Dubbing voice animation series Hindi Male, and the winner is one and only Rajesh Kawa. Rajesh, And our next category is dubbing voice animation series Hindi Male. Again, let's see. वाह, सब मेरे इतने प्यारे प्यारे कलाकार, दोस्त, छोटे भाई. Dubbing voice animation series Hindi Male, and the winner is Sanket Athre. Sanket.
And the next award is Dubbing Voice Animation Film Hindi Male. Let's see. Sir, please do the honors. बहुत दिनों बाद जिस शख्स का नाम ले रहा हूँ दिखाने डबिंग वॉइस एनिमेशन फिल्म हिंदी मेल सप्तऋषि घोष सप्तऋषि और the project is super correct. Saptarishi I think is not here. So Reshma will take award for that. Last but not the least, the award for Dubbing Voice Animation Film Hindi Female goes to... पता कीजिए गेस कीजिए कौन हो सकता है वो आपकी पसंदीदा वॉइस डबिंग वॉइस एनिमेशन फिल्म हिंदी फीमेल एंड द विनर इज नताशा जॉन नताशा द प्रोजेक्ट इज टर्निंग रेड नताशा Natasha is there? No. Every Sharda will take an award on behalf of Natasha John. We are privileged and honored to have her. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Nimisha, and thank you, Nimisha. Nimisha Siroi, everyone. So इस बार हमें 600 से ज़्यादा एंट्रीज मिली हैं इन अवार्ड्स के लिए, more than 600 एंट्रीज, और मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब 6000 एंट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है in terms of getting more voice artists accept and start believing in the concept of an awards program. I've had very healthy debates, discussions, disagreements with a lot of senior artists. I'm sure आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लगता है कि यार ये हम कौन होते हैं जज करने वाले, पर जैसा बड़ी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि इसको इतना सीरियसली भी मत लीजिए. इट्स लाइक आपकी जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस दिन उस वक्त आप क्या लिखते हैं, दैट डजंट रियली डिफाइन योर कैपेबिलिटीज और यू नो योर क्वालिटीज. तो उसी तरह, बट एट द सेम टाइम इट इज सो इम्पोर्टेंट to celebrate the craft, and everyone who is here is a winner. So I'm going to request that I do understand that this is a flawed, that it is a flawed system. Flawed क्योंकि ये system जो है ये कुछ individuals को ये हक दे रहा है कि वो आपकी entries को देखकर सुनकर जो आपने submit की है उस पर अपने judgment या अपने marks दें. It is a flawed system, but then every award system in the world is flawed to that extent. But don't take it so seriously. At the same time, try and participate in it. फिर हम ये नहीं कह सकते कि यार इनसे तो बेहतर मैंने काम किया था. It's like saying कि आप कहें कि उसेन बोल्ट से ज्यादा तेज तो मैं दौड़ सकता हूँ, तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि आप उस रेस में भागे थे जिस रेस में वो थे. तो अगर आप उस रेस में ही नहीं हैं तो फिर हमको क्या हक बनता है. तो इसको ये कोई रेस तो नहीं है खैर, बट मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, स्पेशली जो हमारे बहुत दिग्गज आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, कि you know, इसको एक try to involve yourself with this process. उससे younger artists को भी एक inspiration मिलता है. और जैसा कि आप देख रहे हैं ये awards बहुत democratic है, बहुत transparent है. मेरा इसमें कोई दखल नहीं है, हमारी टीम का कोई दखल नहीं है, हर जूरी के पास में, और ये जूरी इस बात की गवाह है. आप आज कुछ लोग नहीं हैं यहाँ पर, but it's a very transparent system and very unbiased. But हाँ, मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि अगली बार आपने जो काम दिया है कोशिश कीजिए कि अपना बेहतरीन काम दें. ये नहीं कि आपने 30, 40, 50 सेकंड की कोई क्लिप दे दी.
वो उतना काफी नहीं होता है जज करने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि अपने अच्छे से अच्छा काम दें ताकि जूरी को भी मजा आए। एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग, इट्स लाइक फिल्मों में अवार्ड मिलते हैं, हर क्षेत्र में अवार्ड्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग में होते हैं, रेडियो में होते हैं, तो वॉइस ओवर्स में और डबिंग में क्यों नहीं हो सकते। सो थैंक यू कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में आप लोग इसको और ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। सर जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर रहें, क्योंकि अब आप एक खास फेलिसिटेशन करने वाले हैं। उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा श्री प्रदीप शुक्ला जी से कि आप कृपया स्टेज पर आएं। Shri Pradeep Shukla ji. Mr. Shukla started his career in 1959 as a child artist for All India Radio, Patna, and he was 10 years old then. He later joined Radio Ceylon and worked under the guidance of Shri Abhin Sayani as a writer and voice artist. After that, Mr. Shukla also started creating programs for Vivid Bharati. And in 1994, Mr. Shukla ventured into bilingual dubbing with the film Cliffhanger. These were the early days of dubbing in India, by the way. So, you know, we have the torchbearers of the industry. These were the early days, and then, along with the esteemed Mrs. Leela Ghosh, he paved the way for an industry that has grown exponentially. Soon after, he was immersed in dubbing with popular shows, I Dream of Jeannie, Different Strokes, and he has a client list that spans a whole long one. That's Sony TV, Cartoon Network, Discovery Channel, National Geographic, ETV, and Disney Channel. He continued with his valuable contribution to the dubbing and voicing industry, and to this date, his love affair with voicing and acting continues, and we are so happy to please have you also on stage to join and add to the happiness and honor, and we grace the occasion with the same. A round of applause, please. दोस्तों, कुछ नया करने की धुन में हम पुराने हो गए। कुछ नया करने की धुन में हम पुराने हो गए, बाल चांदी हो गए, बच्चे सयाने हो गए। नौजवान प्रतिभाएं आती रहनी चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है जब देखते हैं कि हाँ भाई चल रहा है, कारवां है, बढ़ा जा रहा है। आपको बताऊं, पता नहीं, अभी मुझे ख्याल आ रहा है, आदमी के बदन में, शरीर में एक ही चीज ऐसी है जहां अमृत और विष एक साथ रहते हैं। अमृत और विष, भाई वो चीज है जबान। आप जो बोलते हैं, इसीलिए गुणीजन कह गए हैं, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपुं शीतल हुए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बस यही हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ पर हैं, और अब अगला जो सेगमेंट है अवार्ड्स का, वो हम चाहेंगे कि आपकी आवाज में अनाउंस हो और आपके हाथों से दिया जाए। सर, द माइक इज ऑल योर्स। अवार्ड ऑडियो ड्रामा वॉइस हिंदी फीमेल, एंड द विनर इज स्वरूपा घोष।
प्रोजेक्ट खासकर तो एक बार This whole thing will be incomplete if I do not mention two people in my life who sort of dragged me here because I didn't know that I could do this. One is Sumanth Ray, the voice artist, and secondly, Eminem head Mantra. Without them, I wouldn't have been here. So these actually belongs to you too. Thank you, my friends. Thank you very much. Audio drama voice Hindi male. Winner is Abhishek Sharma. Project details Bhagat Singh ki jail diary. Audio drama voice Hindi male. Winner is Rajesh Irji. Project details Oscar. And the next one. Audio book narration English. Winner is Benaifer Mirza. Project details Arise Awake. Thank you so much, sir. बहुत धन्यवाद. And it's so nice to have stalwarts, taking on names. That itself, is an energizer. And it puts in such a lot of positive energy when we are looking forward to hearing our name up there. And it comes from the mouth of such experts who've been in the industry for so long. And when we talk about felicitation and experts and stalwarts, we have one more stalwart who is has the zest that has been maintained for years together. So let me just get to the point.
I would love to call on stage and felicitate Srimati Pushpa Saxena ji. Put your hands together for Srimati Pushpa Saxena ji, a stalwart voice artist. Pushpa ji has been working in TV and radio from the age of 16 years and done stage plays, children programs, celebrity actor interviews, comparing, dubbing, and she's been doing that for prominent films altogether. She's dubbed for some of the most iconic film characters and actors in dubbed films. Also a trained Kathak dancer. She loves classical music and traveling. She does a lot of social work linked with Nanavati Hospital, Cooper Hospital, and she's associated with NGOs, to name a few, Samanvay, Saheli, Mahila Sangathan. She has been awarded by RAPA for Best Voice in Radio Plays. And that is the energy that she has been giving to the industry. Now you know why she is here on stage, no doubt. Pushpa Saxena has recently been honored by Governor Shri Koshiyar, and it gives us great delight in felicitating Srimati Pushpa Saxena on behalf of the Indian voice industry. Awesome energy, no doubt. Sir, do we have Mr. Ashish Saxena here? Is Mr. Ashish Saxena alone? He's out of station, otherwise we would have loved to have him on stage as well. Thank you, ma'am, and thanks for that energizing walk on the stage while she sashes on with so much fun. अब हम जब फन की बात करते हैं और एनर्जी की बात करते हैं, देखो सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर पाते हैं जब हम संगीत के क्षेत्र में होते हैं, आवाज के क्षेत्र में होते हैं, भाषाओं के क्षेत्र में होते हैं, और ये इतनी सारी, ये तो खास बात है। इनफैक्ट हमारे देश के लिए गर्व की बात है जब हम इंडिया वॉइस फेस्ट की बात करते हैं, तो इतनी सारी भाषाएं हैं कि हमें ये सोचना पड़ता है कि कितने सारे कलाकार उसके साथ हमारे जुड़ पाते हैं और ये इंडस्ट्री बढ़ती जाती है। तो हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे हमारे सपोर्टर्स को, द प्राउड सपोर्टर्स ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट, एंड फॉर दैट आई वुड लव टू रिक्वेस्ट द parties, the people, and the energizers, C Sharp Recording Studio. May I have the supporting individuals to be on stage? I would love to felicitate and the proud supporters of ARK Audio, and also we're going to call upon Skylink to be a part of the felicitation. Please welcome on stage. Here we have from C Sharp. So, C Sharp. So, guys, C Sharp is a recording studio in Pune, and they've also started a studio in Mumbai now. And C Sharp is run by Rohit Devgaonkar and Ankita Modar. So, unfortunately, Rohit and Ankita are not in the city, and they can't be here. So, Niranjan is here with Preetham. So, on behalf of them, I'm going to. On their behalf, I'm going to give this to you. Thank you. Have you already had ARK Studio representation on stage, or is somebody coming from ARK Studio? ARK Audio from Nasik. Vipul Pathak is here. Yeah, hey. ARK Audio Studio in Nasik. Here we have the proud supporters of India Voice Fest 2024. 22, that is. ARK Audio. मैं बहुत ही प्रगतिशील हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ. I'm so excited. Wow, I didn't realize. Well, put your hands together. We really appreciate that support. The next proud supporter, I want to announce a big thank you to our next proud supporter. He is not from the industry. In fact, his company is one of the leading freight forwarding companies in India. He's a dear friend of mine, someone who loves me deeply enough
for always supporting India Voice Fest year on year with his love. I would like to call on the stage Ronnie Govius. Hands together, please, for Ronnie right here to come on stage. Thank you so much, sir. Thank you. That brings us to the next segment. And in the next segment, we have to start giving away the awards. And for that, I would like to. Okay, ladies and gentlemen, the reason why Hemang is fumbling a little is because we have a very special guest coming in any minute now. I think all of you know that we are going to have with us today. Louder, louder. We have with us in just a few minutes the one and the only Yashraj Mukhate. So, पारी हो रही है और रसोड़े में कौन था? और तो हम यशराज के साथ ढेर सारी बातें करेंगे और आप में से कई लोग जानते होंगे Yashraj is also a fantastic mimic and he's a fantastic voice besides being a great composer and singer. So he will be with us in just a few moments. So I guess we had on the show clock, we had Yashraj with us, and since it's still some time before Yashraj joins in, you can. Okay, I was wondering. So we have one of the industry's most electric performers here today, one of the most magnetic performers who's going to sing for us today. Can anyone guess the name? Do we have Keka here with us right now? Keka, are you here? Keka should be here, no? Is Keka there backstage? Keka, তুমি কোথায়? তুমি কি বলছো আমি কি বুঝতে পারবো না? So bad. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and the only Keka Ghoshal. Thank you so much. Thank you. Oh, acha. Huh. I love you all too. My phone is there. Can you please give it to me? Yeah. Yes. Can I see all the hands? उधर आओ क्या? समझ नहीं आ रहा है। इधर सर काम कर लो इधर। कहाँ है? अरे काम कर लो इधर। आ जाओ। और यहाँ पर नहीं।
No, your thanks are not enough, Kika. Don't go like that. Yes, there you are. रात बाकी, मुलाकात बाकी, जज्बात बाकी, और हमें अपनी एनर्जी के साथ इस तरह से एंटरटेन करने के लिए no doubt we have to show our appreciation. Please be center stage. And here we have a round of applause, everybody. क्योंकि अब बहुत कुछ बाकी है, आज की शाम तो अब एनर्जाइज हो ही रही है, और इसके साथ साथ हमारी तैयारी हो रही है कि फॉर द वंस जिन्होंने अपने डिनर पासेस नहीं लिए हैं, और इफ दे वांट दे आर टेम्प्टेड कि यार अवार्ड सेरेमनी के बाद हमें भी डिनर के लिए ज्वाइन करना है, पार्टी के लिए ज्वाइन करना है, सो यू कैन स्टिल गो टू द रजिस्ट्रेशन डेस्क डाउन देयर एंड मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ द डिनर एंड द पार्टी एज वेल आफ्टर द अवार्ड सेरेमनी. But not right now, because right now there is another aspect of creativity that's going to flow right on stage, because it is our opportunity for having a nice tete-a-tete with somebody who has taken online and the music and the creativity by storm. And आप जानते हैं उनका नाम तो हम पहले ले चुके हैं, उनके इंतजार में आहें भर चुके हैं, तालियां बजा चुके हैं, और वो अब यहाँ आ चुके हैं, तो अब और किस बात की देरी. रसोड़े में कोई था या नहीं था, ये यहाँ पर है, इसका सबूत हो चुका है. We welcome on stage Mr. Yashraj Mukhate. Please, and to have a conversation, I would request Darpan Mehta to please take the evening further. Yashraj, the stage is yours. Welcome. हेलो, पार्टी हो रही है? I was not expecting this kind of energy. मैं आके परेशान हो कि क्या पार्टी चल रही है यहाँ पे लिटरली. My favorite. I think केका के परफॉर्मेंस से बेहतर वेलकम यशराज किसी को नहीं कर सकता. What a performance यार, मैं परेशान हो गया, बाहर के आवाज आ रहा था. So everyone, ये लीजिए, ले आए यशराज मुखाटे को. All the way from Aurangabad. It takes some love for the voice industry. And I remember when I was speaking with him, it did not take him a moment to say that I would love to be there. And from that time on, it has been so beautiful. Thank you, Yashraj. Thanks for making the trip all the way from Aurangabad to Mumbai. And Yashraj is obviously the man of the moment. But कुछ बातें हैं यशराज के बारे में जो कोई नहीं जानता, और इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए उनको इतना प्यार क्यों है, और वॉइस इंडस्ट्री से इतना प्यार क्यों है. So Yashraj, everyone knows about the music composer, the viral machine, the social media sensation, the millions of followers. Everyone knows that. But how many people know that Yashraj is also a very avid voice artist and a fantastic impressionist? Some of you who follow his work know the kind of magical stuff he's done. Can anyone name a few characters that Yashraj has done magic with in the last few months? Irfan Khan, that's correct. Kartik Aaryan, of course, and my favorite, my very favorite, the one and only Nilesh Misra. So आज तो आपको कोई जाने नहीं देगा जब तक यशराज के अलावा सारे किरदार बाहर नहीं आ जाए. पर यशराज, पहले आप ये बताइए कि 2-3 साल में life has absolutely turned into a different adventure. How has the journey been, और कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो आपको वॉइस का बताता हूँ कैसे आया, क्योंकि मेरे डैड यूज्ड टू डू दिस, तब ऑर्केस्ट्रा बोलते थे ना तब, तो ही यूज्ड टू डू दिस मिमिक्री कि ये गाना अगर ये एक्टर गाएगा तो कैसे गाएगा, राजकुमार जी ये गाएगा, धर्मेंद्र जी ये गाएगा तो कैसे गाएगा. तो बचपन से मैं देखता था, तो वॉइस के प्रति मेरा जो प्यार है वो पहले से ही था. एंड आई थिंक यहाँ पे किसी को पता नहीं कि शुगर मीडिया को मैंने 2 साल पहले एक मेल डाला हुआ था कि मेरा वॉइस सैंपल मैं रिकॉर्ड किया था, और डिस्कवरी का जो नरेशन वॉइस होता है, तो बट खैर वो तो टर्न आउट वेल, बट आई वाज लर्निंग. So yeah, that was my mail. And voice के प्रति narrate, like basically what I do also with in my videos. देखो ऐसा बुरा मानने की बात नहीं, अमिताभ बच्चन को भी ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया.
So मैं बेसिकली जो मैं भी म्यूजिक के साथ करता हूँ, इट इज बेसिकली डायलॉग्स को लेके साउंड के साथ कुछ तो छेड़खानी करना, बेसिकली दैट इज व्हाट आई डू. एंड आई थिंक वॉइस एक्टिंग इज different, but it is again very close to just manipulating sounds. And that's what I do. And उसके लिए मेरा fascination पहले से ही था. And voice modulation is something I totally enjoy. और जैसे ही मेरे को पता चला कि यार ऐसे इवेंट बुलाए जा रहे हैं जहाँ पे वॉइस डबिंग आर्टिस्ट सारे होंगे, उनको मिलने मिलेगा, एंड पीपल हु अंडरस्टैंड दिस, कि जैसे कोई अभी मैंने कल परसों ही पॉडकास्ट किया है किसी के साथ जहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक इन वॉइस एक्टिंग, उसका क्या होता है रेलेवेंस. तो मैं अगर यहाँ पे आके लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो जैसे ही सर का कॉल आया सर कि मैं तो आ रहा हूँ. और अगर हम वॉइस एक्टिंग की बात करें यशराज, तो ये कैरेक्टर्स जिनकी बात अभी हो रही है, how did you come up with that, and what is the entire process of first doing magic with music, ये जो छेड़खानी आप करते हैं, और दूसरा औरंगाबाद में बैठकर. What is amazing is he is comfortable in Aurangabad and is ruling hearts all over the world. तो एक तो ये म्यूजिक की छेड़खानी आपका प्रोसेस क्या है, और दूसरा वॉइस एक्टिंग को लेकर मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या आपको इतने अनइंटरेस्टिंग लगते हैं कि आपने हमको लेकर अभी तक कोई वायरल कोई पीस नहीं बनाया. हम हमारे देखिए हमारे भी ऐसा नहीं, हम लोग बहुत कैरेक्टर्स हैं, हम लोग बहुत अजीब प्राणी हैं. जैसे हम अगर टेलीविजन का वॉइस करते हैं तो हमारे घर पे जब दूध वाला आता है तो हम कहते हैं कल आना शाम 7 बजे. तो ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत एक और प्राणी होते हैं वॉइस ओवर के, नॉर्मल घर पे बैठे हैं और भाई क्या कर रहा है यार, बस यार चिल कर रहा है, और अचानक फोन आया किसी का, हेलो, हाँ हेलो, लगा सर आपसे वॉइस ओवर, हेलो. तो ये तो अलग करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग प्राणी है. आई होप यशराज आल्सो यू नो टू अटेंशन दे हमारी तरफ, और आने वाले दिनों में आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट को यार रोस्ट करो, यार हमको रोस्ट करो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में किसी ने बोला है कि मैं प्लीज रोस्ट करो, क्योंकि मेरा तो दिल धड़कता है सिर्फ हमारे काम के लिए. तो मैं सोचता हूँ कि क्या करें, हमारे को रोस्ट, हमारे इतने बड़े बड़े कलाकार हैं. आई होप आने वाले टाइम में आप उनके साथ भी कोलैब, आई होप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज सुन रहे हैं ना. सो आप में से कौन है जो, या मेरी पर्सनल बहुत इच्छा है कि आप यशराज हमें नीलेश मिश्रा तो आज नहीं आए हैं, आएंगे किसी दिन, आएंगे 100% आएंगे, बिकॉज कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम नहीं तो कौन है. तो यशराज ये अब इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, सो आई वुड लव इट इफ यू कैन डू समथिंग फॉर अस, इफ यू कैन डू सम मैजिक, क्योंकि ये आप देखो नॉर्मली नहीं करते. नॉर्मली पीपल आस्क यू कि हमको म्यूजिक सुनाओ, आपका नया, हम आपको उसके बारे में नहीं पूछेंगे. डू सम मैजिक विद योर वॉइस. नीलेश सर का तो मैं रिसेंटली डिस्कवर किया उनका कि अब जैसे उनका ऐप आया ना, कुछ वो YouTube पे भी वीडियोस डाल रहे हैं, तो मैं एकदम 3-3 घंटे के इंटरव्यूज हो रहे हैं. वो उनको लेकर जाते हैं, गेस्ट को लेने जाते हैं, फिर वहां से पूरा शूट करते हैं, फिर घर पे लेकर आते हैं द स्लो इंटरव्यू, फिर उनके साथ दिन भर बैठते हैं. और उसमें तो आप इफ यू सी द इंटरव्यूज, देयर आर पॉजेस इन द इंटरव्यूज, 20-20 सेकंड की पॉजेस ऐसे बैठे हो, और उनका बहुत स्लो तरीका है बात करने का. जैसे आप मुझे कोई भी सेंटेंस दे दीजिए तो मैं उनको बोलता हूँ. मैं इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए मुंबई जा रहा था. मैं इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए कल मुंबई जा रहा था. ऐसे करते हैं, ऐसे लगता है कि और आपको सीरियस कर देंगे उस वॉइस के थ्रू. कल मैं इंडिया वॉइस फेस्ट के शो में गया था. प्रतिमा को उसके प्रेम की जानकारी बिल्कुल नहीं हो रही थी. अब कोई भी कितना भी रैंडम सेंटेंस को कोई भी सेलेक्ट कर सकते. मैं हूँ नीलेश मिश्रा और मैं कहानियां सुनाता हूँ. यशराज ने रिसेंटली पॉडकास्ट शुरू किया है, डिकोडिंग वॉइसेस. हाँ, एक्चुअली पॉडकास्ट ही शुरू किया, लेकिन मैं रैंडम एक ऐसी मिमिक्री आर्टिस्ट चांदनी के साथ में बैठा था, बात कर रहा था, तो मुझे बहुत ही मजेदार लगा. हम रैंडमली मिले थे और कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू हुआ जैसे कि बहुत टेक्निकल बातें बताने लग गई. मैंने सोचा कि वहाँ पे जो भी अवेलेबल था मैंने इमीडिएटली मोबाइल पे शूट करके वो शूट किया. तो इट इज नॉट अ पॉडकास्ट, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था. इंटरेस्टिंग. सो आई होप आने वाले दिनों में आप हमें से कुछ आर्टिस्ट के साथ
एब्सोल्युटली कोलैब करें, बिकॉज आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे. देखिए इसी तरह बात से बात बनती है और लोगों को हमारे बारे में जितना ज्यादा लोगों को हमारे बारे में जानने को मिलेगा उतना अच्छा है. ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है, पीपल डोंट रियलाइज कि इसमें कितना मैकेनिज्म जाता है. पीपल लोगों को लगता है कि खड़े होकर बोल तो रहा है, इसमें क्या है, ये मिमिक्री करता होगा. मिमिक्री नहीं है, वॉइस एक्टिंग. आपको पूरा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा तब जाके वो माइक में आएगा. इट इज लाइक, एंड इट इज इवन टफर बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू शो योर फेस. तो आपको थ्रूआउट से सिर्फ ऑडिबली लोगों को एक्सप्रेस कराना है कुछ. तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट स्किल और मैं वही सीखने आया हूं. आज आप मुझे कुछ टिप्स दे दोगे. जहां पर आपने वॉइस आपने मिमिक्री की बात की, हमारे पास इस वक्त ऑडी में वी हैव टू फैंटास्टिक mimics of the industry, very celebrated. Sanjay Kenny, my very dear friend. Sanjay Kenny, say hi. And we have Sumedh Shinde. Sumedh, are you here? Sumedh Shinde here. Absolute genius. मैं सबसे ये इसलिए आया हूँ इंदौर का बड़ा काम. Oh my God, Saurabh is here. Saurabh Chakraborty. So, unfortunately, Chetan आज नहीं आ पाया क्योंकि उनको suddenly पुणे जाना पड़ा और वरना Chetan was also going to be with us. But yeah, it's an absolute full house and it's amazing to have you here. So यशराज, आगे आपके क्या प्लान है? आगे तो यार मुझे बस मैं होप कर रहा हूँ ये कुछ डबिंग गिग मिल जाए मुझे. मैं इसलिए आया हूँ. मुझे यही जवाब जानना था क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे डबिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के बड़े बड़े. इसीलिए आया हूँ. राजश्री शर्मा बैठी है, पूरा एम्पायर चलाती है पूरा. मोना शेट्टी आने वाली है, वो कहीं कैश काउंट कर रही है. तो ऐसे टाइम लगता है. संडे का ही दिन मिलता है. लेट मी टेल यू सर, ये एनर्जी जो अभी यहाँ पे ये रूम है ना, आपने पता नहीं क्या किया है. ये इतने कोलैबोरेटिव, इतना पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा है मुझे. सुपर. राजेश कावा हमारे, संकेत म्हात्रे, नेश्मा चेंबूरकर, मेघना, we have Mantra here, Ashwin Mushran, Amrinder, Navid, oh my God, Arvind ji, Arvind Mehra, Pradeep ji, Vinod Kulkarni Dada, the list is endless. I mean, oh my God, मैं तो शायद देख भी नहीं पा रहा हूँ. So it is absolutely amazing. और आप बता रहे थे कि आपने 2019-20 में आपको इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में कब से पता है? अब जब बेइज्जती हो रही है ठीक से नहीं, उसके बाद मैं मेल भेजा. उसके बाद फिर मैंने ये जो आर्टिस्ट है इनको मैं कई लोगों को फॉलो करता हूँ, तो उसमें से मुझे कहीं रेफरेंस मिल गया था कि, और मैं इन चीज़ों के लिए मुझे इंटरनेट बहुत पसंद है कि मुझे जो चीज़ें अपने आप पसंद है वो अपने आप रेकमेंड करता रहता है. तो उसमें से कहीं रेकमेंड हो गया होगा तो आई गॉट टू नो कि यार एक दर्पण सर कोई है वो करते हैं वॉइस टेस्ट. मुझे तो जाना. Lovely. So you know what I'm going to do? Because Yashraj is here and I know कि बहुत ज़्यादा fans हैं, I'm going to now open this for questions. Any of you have questions? Feel free to ask. वहीं पर बैठ के, चिल्ला के, माइक वगैरह नहीं आएगा. प्रोजेक्शन दिखाओ अपना. सब नोट कर रहे हैं डबिंग डायरेक्टर्स. Anyone? Yes. अरे नीलेश मिश्रा मत बनो, पूछो. आई थिंक इसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्या? उनको माइक लगेगा? डायरेक्टली पूछ सको, कैश मार जाएगा. अरे पूछ भाई, वहीं से पूछो सर. मुझे बोलना है तो बोल के पूछो. ये जेबा गाड़ी मेरा भाई चलाएगा यार. बना तो सकते, मतलब कुछ हो मेरे पास कुछ. तो अब एक काम करते हैं. क्या दे? आवाज है, एक काम करते हैं, आप मुझे वर्ड्स दो, हम अभी गाना. चलो शाबाश. रेडी? चलो. हमारा टैगलाइन है इंडिया वॉइस का 2022 का, आवाजें, क्योंकि हम 3 साल बाद ही कर रहे हैं ना प्रोग्राम लाइव. आवाजें फिर मिलेंगी. आवाजें फिर मिलेंगी. अरे कुछ और वर्ड्स दो ना यार. अरे पूरे खुशियां फिर मिलेंगी, आवाजें फिर मिलेंगी. कैश काउंट करने से याद आया, मोना हैज जस्ट एंटर्ड. मोना शेट्टी इज हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन. अच्छा मोना ने सुना नहीं मैंने क्या बोला, वरना अगर मोना को पता चले कि मैंने बोला कि वो कैश काउंट कर रही, संडे को बुरा मान जाएगी. सो ओके, आवाजें फिर मिलेंगी, आवाजों के जादूगर, और कोई वर्ड, मंत्र, कोई वर्ड कर है?
वॉइस इंडस्ट्री और उसके साथ आवाजें साथ मिलेगी, आवाजें फिर मिलेगी, आवाजें फिर मिलेंगी। लेट्स डू आवाजें फिर मिलेगी। ओके, ये सही बात है। अमरिंदर पाजी ने क्या लाइन, हाँ, लेकिन लाइव भी जा रहा है, आई थिंक कॉपीराइट का हो जाएगा, हम नए धुन बनाते हैं। ये भी आवाजें फिर मिलेंगी। क्या बात, ओ माय गॉड, ये तो रिदम है। खट्टी मीठी चुलबुली, खट्टी मीठी तीखी चुलबुली, हाँ, खट्टी मीठी चटपटी चुलबुली, खट्टी मीठी चटपटी चुलबुली, खट्टी मीठी चटपटी चुलबुली, खट्टी मीठी चटपटी चुलबुली। आवाजें फिर मिलेगी, आवाजें एवरीवन, आवाजें फिर मिलेगी, आवाजें फिर मिलेगी। look at this absolute genius, absolute genius। वो वॉल्यूम तो हो गया ना, मिल गए ना हम। हाँ जी, हाँ, ये एक सवाल आने वाला था कि आपके फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट कौन है? यहाँ पे तो काफी लोग हैं, तो मैं एक्चुअली नहीं, दो तीन पूछ रहे हैं, मतलब हाँ, दो बता दो, मेरे अलावा दो बता दो। देखो मैं तो आपको बोलता हूँ कि मतलब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट आपको बोल सकता हूँ जो मेरे फेवरेट, और वॉइस आर्टिस्ट भी ऑफ कोर्स, लेकिन चेतन सर जो अभी यहाँ नहीं आए, उनको मैं स्टार्टिंग से बहुत फॉलो किया है। उनका मेरा फेवरेट गाना सेगल ब्लूज, मैंने उनको वहां से डिस्कवर किया था कि यार ये कैसा, उनका इंटरव्यू मैंने देखा कि यार ये तो रिकॉर्ड कर रहा है इंसान, वॉइस को इक्वेशन बना दिया उन्होंने एक इंटरव्यू में करके कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ट्वीट कर दोगे शक्ति कपूर बन जाएगा, इसको ऐसे करोगे तो अक्षय कुमार बन जाएगा। मतलब मेरा दिमाग पड़ गया कि यार ऐसे हो सकता है। सो आई थिंक ही इज माय फेवरेट, एंड मिमिक्री आर्टिस्ट में आई थिंक सुमित सर इज हियर। सुमित, can you invite on stage please? Come. बिफोर आई टेल मैं फैन इनका क्यों, देखो मिमिक्री ऐसी चीज है ना कि बहुत लोग करते हैं मिमिक्री ऐसी, क्योंकि मिमिक्री करना बहुत इजी है। मैं वैसे ही सीखा हूं कि ये कैसे करते हैं, मैं ट्रिक सीख लेता हूं। इनके जैसी एक्यूरेसी मैंने कहीं नहीं देखी है, मुझे बहुत पसंद है। और जिनके बहुत प्रोमिनेंट वॉइसेस होते हैं ना, कि जैसे किसी का आप कर लोगे बहुत प्रोमिनेंट उनके फीचर है, वो पकड़ना इजी होता है। द काइंड ऑफ वॉइसेस ही चूजेस टू डू, जॉन इब्राहिम, इमरान हाशमी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसे कर सकते हैं। So I think I love him for that. Thank you so much, sir. And I would like to tell everybody, because you know, Yash Raj, before he became a sensation, I love this Irfan Khan. He does the best Irfan. क्योंकि अभी क्या होता है ना कि इरफान खान जब भी कोई करता है तो बोलते स्टार्ट, अगर उसने शुरू किया कि क्या भैया, तो मैं समझ गया कि ये ओरिजिनल नहीं, ये सुनील पाल से कॉपी किया। There are certain things, right? But what he does, and he had sent me a clip also, and I had shared it on my page also that day. Way before Rasoda. Way before 2020. And so, but एक बार पहले you start with Irfan and then listen to Irfan sir. He does a brilliant Irfan. So थोड़ा लंबा डायलॉग है, so I think I'll just do the dialogue because वो मेरा इतना लर्न हो चुका है, मैंने उसको गाने की तरह लर्न किया है। And थोड़ा सैड डायलॉग है because he's talking about वो रोग फिल्म का डायलॉग है, और वहां पे वो ऐसे बात कर रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की उस कैरेक्टर ने उसमें, और वो साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठ के ये बता रहे हैं उसको कि मेरे साथ क्या हुआ। तो पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन हो गया है। जैसे रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूं, दुनिया वही पुरानी है, वो ऐसे ही चली जा रही है।
मैं सोचा भाई जो जिंदगी गाड़ी चल रही है इसकी मैं चेन खींचता हूं और मैं उतर जाता हूं। 3 वजह ना करने की। पहली, जब पिस्तौल में आती है उसकी गोली 45 रुपए की होती है, गोली सरकारी होती है। मैं सोचा भाई अपना सुकून खरीदने के लिए मैं साला पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करूं। दूसरी, मेरा स्टैंड मुन्ना, उसके कुछ रिलेटिव आए थे हरियाणा से, नेक्स्ट डे होली थी। मैं सोचा मर जाऊंगा तो इसकी होली खराब हो जाएगी। तीसरी, जैसे ही पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे पे लगी, मेरा ध्यान गया खिड़की की तरफ, और खिड़की के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सा इंद्रधनुष था। मैंने सोचा इसे देखते देखते तो नहीं मारा जा सकता। मैं उठा खिड़की बंद करने, खिड़की बंद की, मैंने वापस लौटा तो वो मोमेंट चला गया, वो टूट गया। उसके बाद मेरा मन का दिल नहीं किया। So we start with the big question. So how are you doing? Just lovely to be here. Just lovely. My God, you guys are here. Just look at you guys. What a performance! What a performance, man. और एक्चुअली यार क्या है, तुम लोग सुबह बैठे हो, सुबह बैठे, मैं भी यहाँ पे हूँ, आमिर खान भी यहाँ पे है, और जो चीज़ होनी चाहिए है ना, दर्पण इज ग्रेट है, दर्पण ने बहुत मुझे बुलाया, और कभी कभी यहाँ पे पंकज त्रिपाठी भी आया। And Mona is here because Ranveer Singh is also here. My God, हमने क्या कमाल का काम किया यार। You guys should see this, क्या कमाल किया हम लोगों ने। My God, कमाल। Thank you guys, thanks a lot. So Sonu and Yashra's favorite I would like to A.R. Rahman. So if it is like Sonu Nigam ka, you know, like so जब मैं इंडियन आइडल में गया था तो मुझे 2 लोगों ने रिजेक्ट किया था, बस हनी मलिक बहुत पसंद है। लेकिन अगर सोनू निगम सामने बैठे तो क्या बोलते हैं? सोनू निगम इज लेकिन कि अगर उनके सामने किसी ने रफी साहब का गाना गा दिया तो फिर तो खत्म, राइट? लेक्चर ये क्या गाना मुझ पर दिल चाहता तो Rahman would be like, Rahman is to compose. So if you imagine Rahman sir is composing and SP Balasubrahmanyam बैठे हुए, रोजा का composition चल रहा है, just 2 minutes. तो Rahman would be like, you know, कि what? We're gonna sing this song. It's song great. It's for us. स्वागत से धरती रही जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे। And the song is रोजा जाने मन तू ही मेरा। Then SP sir comes. May I sing the song? चुकी उछली जैसे चुने फूल जो खिले थे वो शूल बन गए क्यों, जी रहा हूँ इसलिए दिल में प्यार है तेरा, जुल्म से रहा हूँ क्यों इंतजार है तेरा, तुमसे मिले बिना जान भी न जाए,
कयामत से पहले सामने तुम्हारे कैसी है तू? Thank you so much. Thanks a lot. Thank you everybody. Thank you so much. Absolutely amazing. Guys, all good? How was it? किसकी? क्या वो? नाना पाटेकर. I don't think Yashraj does Nana Patekar. Like I know one dialogue with accuracy like you guys decide कितना है, ठीक है? Okay. कुछ मेरे दिल्ली के दो बंदे थे, मैं नहीं जानता. पुना घुमाता रहा कैब पे गए बात नहीं की चौथा. तीसरे को ऐसे ठोक दिया, मैंने ठोक दिया. दूसरे को पुना एयरपोर्ट छोड़ा, मैं बम्बई वापस आ गया. बस इतना ही आता है. Any more questions from anyone? फिर मत बोलना नहीं बोला. बहुत जोर से क्वेश्चन आया. तो आई थिंक पहले तो मैं प्राइमरीली आई एम अ कीबोर्ड आर्टिस्ट, मतलब मैं चर्च कोर में बजाता था पहले. तो वहाँ से आई स्टार्टेड प्लेइंग एंड डूइंग लाइव गिग्स. तो बर्थडे पार्टीज, मैरिजेस वगैरह में आई यूज्ड टू जस्ट टेक माय कीबोर्ड एंड सिंग. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि किसी का बर्थडे था एंड आई जस्ट टुक माय कीबोर्ड, और उनका भी खर्चा बच जाता था क्योंकि बाकी कोई नहीं लगता है. आई यूज्ड टू जस्ट प्ले एंड सिंग. सो या दैट वाज माय फर्स्ट गिग फॉर अ बर्थडे पार्टी. तो सिंगिंग में था. Yes. अभिषेक मिश्रा. अरे आपके पास. हाँ. कोई अगर आप न्यू वॉइस पिकअप करने की सोचते हैं, तो लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? मतलब पहले आप सुनते हैं उसको, दूसरे समझते हैं, इक्वेशन, ग्राफ वगैरह समझते हैं, हाउ डू यू डू दैट? सो मेरा इसमें तो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ. मतलब बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर कुछ बहुत मैं कॉपी कर सकता हूँ. मतलब बहुत बार मैं उसको सिंगिंग के जैसे कॉपी कर लेता हूँ गाना. तो मैं बहुत बार कोई चीज सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में बैठ जाती है. ऑल्सो आई थिंक मैं जो आवाजें मैं करता हूँ थोड़ी बहुत भी, all those voices are very close to my actual voice also. So that is why I find it little easier. तो मैं कोई ऐसे निकाल नहीं सकता. If you ask me कि यार थोड़ा ऐसे अमरीश पुरी का करके दिखा, तो I don't think I will be able to do it. उसका एक अलग मैकेनिज्म है जो मुझे पता नहीं है. तो मैं अपना फ्लूक में जो मेरे से आता है वो करता हूँ. तो मुझे उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है वो पता ही नहीं. तो मैं सीधा सुन के जैसे कार्तिक आर्यन का मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहा हूँ भूल भुलैया के टाइम पे. तो मुझे देखा कैसे बात करता है, ऐसे ना कैसे क्यों करता है. तो मुझे लगा कि यार इसका करना चाहिए. और मैंने स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक, तो मुझे लगा कि अच्छा मेरा जो वोकल रेंज है खुद का इज क्लोज टू व्हाट ही हैज, इसलिए इट इज इजियर. आप बोलोगे मुझे जैसे अभी ये करते सुमित सर करते हैं, वो रणवीर सिंह भी करते हैं, शाहिद कपूर भी करते हैं, और उसमें बहुत थिन लाइन. रणवीर सिंह और शाहिद कपूर में आई थिंक ही लग रही क्योंकि बहुत ही थिन है, लेकिन ही नोज कि उनको पिच वो पता है कैसे करना है. तो वो मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा रैंडमली. Yes. शाबाश. हाँ जी. मुझे तो मैं तो अभी एट दिस पॉइंट मेरे को कंटेंट क्रिएशन में मजा आता है. और क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए बोलता हूँ कि फिर मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ. मेरे को कोई रोक नहीं सकता. इंस्टाग्राम पे अगर मुझे मिमिक्री वीडियो डालना है तो मैं मिमिक्री वीडियो डालूंगा. मुझे सॉन्ग डालना है, मैं भोजपुरी गाना बनाने भी तो वो भी कर सकता हूँ सर. तो उधर कोई बंधन नहीं, इसलिए मुझे कंटेंट क्रिएशन ज्यादा पसंद है. यस मैम. अच्छा आप औरंगाबाद से हो? ओह, औरंगाबाद which is now Chhatrapati Sambhaji Nagar by the way, and also so yeah, तो अब मैं जाऊंगा तो आपको अभी मिल लूंगा ना. वहां पे क्यों मिलेगा? वहां पे भी मिल लेगी.
एक्चुअली मैं बोलूँ मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा बेडरूम से मैं स्टूडियो जाता हूँ, स्टूडियो से बेडरूम आता हूँ बस, और मैं थोड़ा सिटी के थोड़ा बाहर रहता हूँ। मैं आपको मिल लूंगा बाहर, लेकिन मीट हट पाओ हीरा जी। हाँ, very important question. 2 tips for reel and content. I think exclusivity is one thing which I think कि हर जगह काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 50 दुकानें लगी और सब में सेम ही सामान मिलता है, तो इट इज मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज देखे तो व्हाट आर द चांसेस कि वो आपकी दुकान पे आके खरीदेगा। तो आपको कुछ ऐसा सामान बेचना पड़ेगा जो कहीं और दूसरी दुकान पे नहीं मिलता। तो दैट इज वन थिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्पेस में मैं जो करता हूँ म्यूजिक में डायलॉग ये करके, सो देयर आर नॉट मेनी पीपल इन दैट जोन। तो अगर वैसा टाइप का कंटेंट किसी को देखना है तो मैं ही अकेला हूँ। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपकी ऑडियंस आपको पक्की मिल जाती है वहाँ पे, क्योंकि किसी के साथ कम्पीट करने की जरूरत नहीं। दैट इज वन थिंग। दूसरा है कि थोड़ा टेक्निकल उसके बारे में थोड़ा अवेयर होना बहुत जरूरी है कि लाइक यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। हाँ, थंबनेल अच्छा हो, वीडियो क्वालिटी इट हैज टू बी सर्टेन वे, क्वालिटी नॉट इन द सेंस ऑफ टेक्निकल क्वालिटी की वीडियो 4K में शूट करो, वो जरूरी नहीं है। मैं अपने फ्रंट कैमरा में शूट करता हूँ मेरे सारे वीडियोस, बट क्वालिटी कंटेंट का क्वालिटी है अभी। एंड आई थिंक दीज आर 2 थिंग्स। ये तो मैं सक्सेसफुल हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि नहीं तो मैं उसके पहले बताऊँ मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, चल गया तो सक्सेसफुल, नहीं हुआ तो एक्सपेरिमेंट। Yes, just one more question. Yes. So films and OTT तो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ अभी, लेकिन that is not something I am chasing. Films अगर like I don't understand the point because I love the internet, I love this space. मेरे को बहुत मजा आता है यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने को। एंड मेन एज आई सेड कि यहाँ पे लिबर्टी इतनी है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर हायरार्की नहीं है कोई। मेरा मन किया मेरे को मच्छर पे गाना बनाना है, मैं मच्छर पे गाना बना दूंगा, नो वन इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग दैट। तो मुझे यहाँ पे वो मजा अच्छा लगता है। अभी अगर मैं कोई फिल्म के लिए जाऊं या फिर चेस करूं कोई डायरेक्टर को, या फिर उनको बोलूं यार मेरा गाना सुन लो आप, तो पहले तो मुझे उनको भेजना पड़ेगा, फिर उनको अच्छा लगे, मैंने बनाया हो उनको अच्छा लगना चाहिए, फिर प्रोड्यूसर को अच्छा लगना चाहिए, फिर लेबल को अच्छा लगना चाहिए, तब जाके वो बाहर आएगा। इतना मैं क्यों करूं? तो आई थिंक बेस्ट वे इज टू जस्ट पुट इट लाइक, लोग अपने जो शहर में रहते हैं वो छोड़ के यहाँ पर आते ही इसलिए कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, कि मैंने कोई चीज बनाई वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए यहाँ पर आते हैं ना। अगर मुझे इंटरनेट वहीं पे वो पार दे रहा है कि मैं वहां से 50 लाख लोगों तक पहुंचा सकता हूँ अपना गाना, तो मैं क्यों आऊँ यहाँ पर? I think Yashraj is a classic example. Telugu कहते हैं ना, small town boy made it big, but he's a classic example. He's so unassuming, so humble, and I think अनायास ही इन्होंने ये कह दिया कि यार just don't take things too seriously, keep trying, and you'll find your way. So I guess even for voiceover artists, do you have any tip for voice actors who want to explore the world of making viral content as spoken voices? यार इसमें अनफॉर्चुनेट चीज ये ऐसी ना कि लाइक वॉइस आर्टिस्ट दे डोंट गेट टू शो देयर फेसेस। इट इज वेरी हार्ड। लाइक बहुत अच्छा वॉइस आर्टिस्ट भी होगा तो लाइक आई हैव सीन सम केसेस जहां पे डबिंग किसी आर्टिस्ट ने की थी, एंड बिकॉज़ दे वेंट फॉर अ बिगर सेलिब्रिटी स्टार बिकॉज़ दे वांटेड द फेस, और तो आई थिंक व्हिच वर्क्स फॉर देम। बट मेरे को लगता है कि ये जैसे अब ये फेस्ट हो रहा है, इट इज एन एक्सक्लूसिव फेस्ट, वॉइस आर्टिस्ट के लिए कहां और दूसरा फेस्ट होता है। तो आई थिंक ये जो कम्युनिटी है जैसे बढ़ती जाएगी, पीपल विल रियलाइज कि अच्छा लाइक बेसिक इज कि इसमें करियर बना सकते हैं, कि इसमें पैसा मिलेगा, दैट इज द मेन थिंग। सो व्हेन पीपल रियलाइज कि अच्छा ये करियर है, डेफिनेट करियर। जैसे अब मुझे बोलते लोग, मुझे थोड़े एजेड लोग, मैं अभी अंकल बोल सकता हूँ, अंकल जब मिलते हैं मुझे तो बोलते हैं कि ये क्या करते हो मराठी में, मतलब शादी वादी में जाता हूँ तो बोलते क्या करते हो? मैं बोला मैं गाने बनाता हूँ। अच्छा दूरदर्शन? तो दूरदर्शन के आगे वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत बुजुर्ग होंगे, बहुत ही वो बूढ़े, बहुत ही पुराने, जो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ तू वैसे तो मुलगा ना काय करते इसमें? सॉरी
तो बेसिकली अगर उसमें करियर आपको दिख रहा है और एक्सपोजर मिल रहा है, तो और एक्सपोजर करने का भी तरीका यही है कि आप इंटरनेट पे डालो, अपना अकाउंट बनाओ, डालो बिंदास पब्लिक डोमेन में। कौन कौन रोक रहा है? मैंने बोला कि ये मैंने फिल्म आपने डबिंग किया किस फिल्म का, ये मैंने किया, मेरा आवाज है, वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के पब्लिक डोमेन में। I think that's amazing. और जहाँ तक करियर की बात है तो obviously it's a career. हमारे यहाँ पर लोग हैं जो 50-60 सालों से they're stalwart voices. और जहाँ पैसे की बात है तो मैं भी क्या मुंह बोलूँगा कि कितना पैसा है इस इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे बोलिए आपकी कैसा है इधर, कैसा इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है? Is it good? कितना पैसा है ये मैं इस बात से बताऊं कि आज हम लोग शायद this is the only time we're speaking for free. कितने और एक और चीज, हम लोग बिगड़े हुए शहजादे हैं कि बोलने के भी पैसे लेंगे. So I think the message out. But Yashraj, it has been amazing, and I hope you'll stay with us for some time. In fact, it is going to be a lovely long evening. After this, we have once this entire thing ends, we continue on the rooftop for dinner, and we have a lovely party lined up. So everyone, put your hands together for Yashraj Mothane. Thank you, Yashraj. Thank you too. आपको फिर भी कुछ कहना है? शुक्र है. Well, I have freedom to go to that because there are so many awards and there are so many hearts that are still beating eagerly to know if their name is going to be announced, and we are really looking forward to what's going to happen the rest of the evening. क्योंकि रात बाकी, बात बाकी और जज्बात बाकी को आगे बढ़ाते हैं. ले जाता हूँ 20 साल पहले की एक छोटी सी कहानी में, जिस कहानी में मैं हूँ. 20 साल पहले की बात है, and I was novice voice training के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और एक बार एक इंसान बोलूँगा क्योंकि मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ अभी कि कौन, वो मिले और उन्होंने मेरी वॉइस को टेस्ट किया, और वॉइस को टेस्ट करने के बाद क्या होता है जब भी वॉइस टेस्ट होने जाती है तो कैसे हम सब कॉन्शियस हो जाते हैं ज़्यादातर जब भी हम जैसे ऑडिशन देने जा रहे हैं या सैंपल भेज रहे हैं और फोन उठा के जो हेलो वाला होता है वो. But then I also did the same thing, completely novice and raw. And after the voice test, she sat me down and she said, Hemant, I just have one tip for you. Don't use any of your voices other than your natural voice. And trust me, it's going to work like magic. And yeah, clap your hands, don't stop. I would love you to know who that person is. Because she gave me an insight. This was 20 years ago. I was in India, I lived abroad, and today I'm a full-time voiceover artist, and I've used that tip for all the time. And thanks to her, today I'm here. I'm part of the voice industry, and I'm happy to be able to announce to call her on stage. Yes, I'm calling on stage the speech, language, and voice pathologist, Mrs. Rama Subramaniam. Are you here? Are you here? I would love if you're around, because this is where we had a major turn when I went on with it. And Mrs. Rama Vaidyanathan is around. Okay, she's left. Oh my God, मौका मिला था मुझे उनसे बहुत शुक्रिया करने का, और हम चाहते थे कि वो अगले अवार्ड्स की just hand over करें. तो as she is not here, we would request Mr. Ravi Agarwal to please come on stage and give away the next segment of awards that we would love to take to the next time. I would be calling out the award category, and I would request you to call out the names as I show you. So, the award for singing for judged content goes to, and the winner is the same person who was performing
here. Keka Ghoshal. So that's for the project Pinocchio and Keka here as many performers there. Cheers on stage. I want the chairs on stage because the photographs don't need them. Sorry. Taking it further, sir, please, I have 3 more awards in your name. Well, taking it further. The next award is for the corporate film Voice in Hindi. The award goes to Amrinder Sodhi. For the project Turbo Please. Congratulations, Amrinder, over on stage to take your award this year. Dance, public demand, dance. On the team below there! An award-winning voice artist, no doubt, and here's another better added to the cap. Going to the next category, award for corporate film voice in English. The winner is Ashwin Mushran for Uppercase Sustainability Story. Ashwin Mushran on stage, a voice and also a face that many know from the industry, whether it be television, whether it be commercials, as well as films. And now, yes, another fellow in that. Ashwin Mushran on stage. Congratulations. That was great. Congratulations again. Taking you further to the next category, the award for radio commercial voice in Gujarati. The name is Rajesh Kawa. Full power se aano bhai, full power. Well, the project was Aditya Birla, and here is the award for the same. Rajesh Kawa, full power, people. Thank you so much, Sir Ravi sir. He is the programming head of Z Bioscope, and that's where the entire energy has also been coming in, a part of the jury panel, and a lot of hard work gone behind selecting the voices, the talents, the zest that they have contributed by their voices to the various productions that we have been hearing left, right, and center over the years. Taking it further, I would like to call upon Darpan Mehra to call somebody special on stage. Hi everyone, we have with us Tarun Khem. Tarun Khem is a fantastic voice artist, stand-up, impressionist, especially of the English dialect. You must have seen Tarun, very popular on social media, especially for his English dialect videos, and he does fantastic voices. Thank you, Darpan. Thank you. We please have a huge round of applause. Guys, you guys have been absolutely fantastic tonight. So, yes, my name is Tarun Khem, and I grew up in Hong Kong. And you know, it's an absolute privilege to share the stage with so many talented individuals today. So I'm not going to waste any more time. I'm just going to get right into it. So I love what I love the most is I love accents, and I grew up speaking them because I grew up in Hong Kong. So now here we go. What I have for you is a very special act. I don't really have a script, so I'm just going to take you around the world in about 5 minutes with all different accents. Okay? So here we go. Has anyone been watching the World Cup? Okay, so I'll start with obviously France and England yesterday. You know, it's a pleasure to be here today. I'm from France, and you know, with the French language, it's very confusing because we sound like we are confused all the time. You know, we do. You know, it's I don't know why. You know, you see, every language has every accent has a frequency. So for the French one, it's like
welcome to the Voice Fest today. And, it's a pleasure. We won yesterday and we beat the English. I went to Bangalore for an after party. I had too many Kingfisher. That's why I'm a bit hungover today. And then there was this English guy who I met. English guy who told me, mate, I can't believe it, yeah? I can't believe we lost to France. Bloody hell! I can't believe it, man. 81st minute, yeah? Harry Kane, how the hell did he miss that penalty, man? I can't believe it. Unbelievable. Thank you, Darpan. Darpan, thank you so much for having me. All you guys, namaste, namaste. Shukriya. Tumko lagan kare padenge. Mujhe Hindi aati hai. Now, I'm going to take you to meet my Nigerian friend. Hello, how are you doing today? How are you doing? Well, welcome. It's a pleasure to be here. You know how you're doing. You know why I come to India? It's because I've come here to find a new wife. That's right. So I have to find a new wife. Also, I do not understand why in the voiceover industry you need to use more Nigerian voice in your ads and everything. You must use Nigerian voice. It's good for you. Now I'll take you to my friend from Scotland. All right then, I'll tell you right now, from Scotland. My name is McGregor. How you all doing? You having a great time? You know, I'll tell you something, right? With accents, right? When people try and do accents, normally it sounds a bit caricaturish, but you want to try and keep it natural and smooth, you know what I tell you right now. And with a Scottish accent, you don't have to roll your R's all the time. You know, I'm from Scotland. Don't talk like that. Who talks like that? Just be normal, right? How you doing, lady? You're looking absolutely beautiful tonight. I'd like to buy you a drink sometime. That's right. Now I'll tell you, now I'll take you to my friend from Australia. How you going, mate? Oh yeah, from Australia. Mate, I just want to say in Australia, what we do is we go, oh yeah, oh yeah. I mean, anything happens, mate. Like, let's say if my grandmother died, I'd be like, oh, I heard your grandmother died last night. Oh yeah, yeah. Mate, I heard you went on a date last night. Oh yeah. So that's the thing. And with Australian accents, right? It's basically if interest rates go up, bond prices go down. It's like an inverse relationship between bond prices and interest rates. All right, I'm boring you right now. All right, next up, I'm going to bring you to this Chinese. Who's been to Hong Kong here? Anyone been to Hong Kong? Hello, hello, nice to meet you. I'm from Hong Kong. It's so good to be here. You know, there are two types. You know, I asked everybody yesterday. I meet an American guy. I asked him why everyone wants to go to America. You guys are fighting for gun control. That means everybody have gun over there. If I walk in on the street, somebody just go bang bang, huh? And then I got, that's why I call it bang bang. I don't like that bang bang, huh? And then, you know, now this is a local Hong Kong accent. Now I'm going to take you to a more sophisticated politician, how the Hong Kong politician thing. You know, Hong Kong is a very interesting place because it's a very unique city which is fighting for democracy and universal suffrage. Okay, now I'm boring you. I get it. Now I take you to Russia. Okay, we'll go to Russia. All right, my friend, how are you doing? That's right, I'm from Russia. Pleasure to meet you. How are you doing? Every day. I like vodka, caviar, and the Russian women are like angels, I tell you. You know, the Russian accent, everybody thinks it's danger when I speak, but I like teddy bear. I like teddy bear and fluffy rabbit. I'm not a dangerous guy. I like to do everything, no problem. Now, I take you to Philippines. Oh my God. Who's been to Philippines here? You know, I want to say it's such an honor to be here today with the India Voice Fest. India Voice, that's right. I know why you're laughing because of the F and the P. I know, okay. I like McDonald's too, French fries, and you know, McDonald's. But it's really a pleasure to be here. Now, I'm going to, oh my God. You know, Manila and Mumbai is very similar because there's so much traffic everywhere. So much traffic. Everywhere there's traffic. Now I'm going to take you to meet my friend from Dubai. My friend, how are you doing today? Hi, yalla, habibi. How are you doing? Very good, very good. You know, I'll tell you something, my friend. I want to tell you all. I've got a lot of money, right? Lot of money. I can take you anywhere you want. Magic carpet ride, helicopter ride, anywhere you want. No problem. Now I take you to Italy. Who likes the pasta? Spaghetti bolognese. That's right, me from Italy. It's a pleasure to be here today. And I want to thank you all for having me. And you are looking very, very pretty. It's a pleasure to be here. I hope to see you at the after party after this. And we are going to do dancing. And I like, you know, Bollywood, Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor. Very nice, Ranbir Kapoor, my favorite actor.
Who over here has been to Singapore? Raise some noise from Singapore. What are you talking from Singapore? I go Singapore. How are you? No, Singapore is a very interesting accent. We talk too much la 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 la. You know, like a la la land. I don't understand. Somebody told me that Singaporean accent is one of the most sexiest accents in the world. I think they're crazy. Who wants to be with this? Talking like this. Go on a date. Oh, you're looking very beautiful. Very beautiful. No problem. Now I'm going to take you to Ireland. Who's been to Ireland? Now the Irish accent is a bit difficult, right? Because your mouth doesn't move that much, all right? And we say words like mark, park, work, going to work, right? Your mouth doesn't really move that much. And it's difficult to do the Irish accent without swearing. I would love to swear right now, but I can't. I would love to, but I can't. Now, I'll tell you, the next one I'm going to do is a Jamaican. Wagwan, me or main man from Jamaica, Kingston Beast. Yeah, me, I'll tell you right now, we're going to have a great time at the India Voice Fest. Ladies and gentlemen, please make some noise. Thank you. So that was about I think 15 countries. But ladies, I want to have a message for all the ladies here. See, ladies, you like actors, right? You like actors? Well, wow, yeah, that can be said, yeah. How's it going, yeah? I love you guys all, yeah. Wow, yeah, you guys are looking really beautiful, man. Come on, yeah. You remind me of Bebo. And I love doggies. I love doggies so much, man. It's so great to be here at the India Voice Fest, man. Demo's probably at home being potty right now, but it's okay. Wo pura din potty kar raha hai. And I just can't believe Hrithik Roshan is right here. Hi guys, you guys are absolutely fantastic. And I just love all of you, man. You're just unbelievable. And man, Ranbir Kapoor, how are you? Hi guys. It's a pleasure to be here, and thank you so much for having me. Thank you so much. I just want to say that you guys are looking absolutely beautiful, and I would love to. Maria was supposed to come, but she's busy at home. Actually, I don't know what she's doing, but who knows? But thank you so much for having me, and it's been an absolute pleasure. So thank you so much. And I just want to finish off with my great friend, Mr. Sachin Tendulkar. It's really an honor to be here today, and I would like to thank all of you for being here. And I'm a batsman first, and I will be back with the topic. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Darpan. Thank you, Tarun. That was Tarun came, and we have a very, very special video which is coming up. I will request your attention. Shumanto Ray, all of you know Shumanto. Where's Shumanto? Shumanto? He's here? Dada. So last year, Shumanto made a beautiful video called Awazein, जो इन्होंने बनाई कुछ चुनिंदा voice artists के साथ में. बहुत बढ़िया video. इस बार he followed it up with another video, Awazein 2.0, but इस बार इसका concept थोड़ा सा अलग था. Instead of taking veteran known voice talents, Shumanto was kind enough to include winners of India Voice Fest Talent Hunt. So the past winners of India Voice Fest Talent Hunt are featured in this beautiful video made by Shumanto Ray, and we will play it right away. गुनगुन कर गुनगुनाती मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती थी। मेरे पापा की आवाज में कोई ना समझने वाली बात है, आसानी से समझा जाता है। टीचर की आवाज में डांट के कोई जल्दी सबक सिखाई थी। लाख परेशानी में भी दोस्त की आवाज यूं दिलाती थी। हर किसी की जिंदगी में आवाज की जगह कुछ खास है। सच मानिए कि सन्नाटे में खामोशी की भी एक आवाज है। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, उसे उत्सव की तरह मनाइए। एक सुर, एक सुर, एक सुर, एक आवाज में इंडिया वॉइस फेस्ट का परचम लहराइए। Shumanto Ray, please, can we have you on stage?
just to say thank you. One of the most dapper guys in the industry, Shamanto Ray. So Shamanto really truly lived up to the motto of India Voice Fest, to keep it very inclusive. And it is not just veteran artists that get featured here. These are all aspiring or budding voice artists. And what a lovely video made by Shamanto. Thank you. And now I'm going to call upon the host for the next segment of awards, my very dear friend, fantastic voice artist and a fabulous event anchor, well-known podcaster, Hardik Vaidya. Good evening, ladies and gentlemen. It is such a pleasure. It's an absolute honor to see the faces here and to address you. It's absolutely a dream come true. With that being said, Darpan has given me some very strict notice that we've got to rush through due to the paucity of time. I'd love to welcome on stage to give away the next set of awards, the one and only who's been the most pivotal woman in the industry for giving break to people like me and innumerable like me, the one and only Mona Shetty, President, Sound and Vision India. थोड़ा शोर तो मचाइए। Welcome, so good. Once again, ladies and gentlemen, the one and only Mona Shetty. There are two awards that we need to give away. So we start with the first one. The award for dubbing voice live action series in the male goes to one of my favorites, Uplaksh Kochar. Congratulations, Uplaksh. The project details are for Moonlight. Voice live action series Hindi female goes to Surabhi Javeri Vyas from Money Heist. The project details are for Money Heist. Many congratulations. The next award, dubbing voice live action Marathi, goes to Sanjay Kenny. For Golmaal Fun Unlimited. Sanjay? Alright, dubbing voice live action film Hindi में goes to इसने तो एक्टर को भी टक्कर दे दिया. Any guesses? Vaibhav Thakkar for Spider-Man.
film Hindi female goes to? One of my dearest contemporaries, Neshma Chembuja, for The Matrix Resurrection. Award for dubbing voice live action film English goes to? My very own boyfriend, Viraj Yadav. Jadugar. All right, ladies and gentlemen, the last award of this segment is dubbing voice English, and it goes to Noella Menon for The Wildlife Ranger. She's in here. She's in Singapore. Would a pretty lady like to come and take the award for her, please? All you pretty ladies. Can someone of you take it on your behalf? Yes. Which pretty lady other than Kiran Mishra? Well, congratulations to Noella Menon for winning the dubbing voice English award. On her behalf, collected by Kiran. Thank you, ladies and gentlemen, once again. Many congratulations to all the winners, and once again for Mona Shetty, ladies and gentlemen. Thank you. Hardik, thank you so much. Hardik Vaidya, everyone. Thank you. And now that we have Mona with us finally, क्योंकि बताना मत कोई भी क्यों. So and everyone, isn't Mona looking absolutely gorgeous? I told her to dress for the red carpet. She is the red carpet. Now, Zyada, have you seen every single live of Darpan on Instagram? He's just been saying, please make sure you work on your red carpet look. Initially, I thought it was real pressure, then I thought maybe he's really worried about turn up really badly dressed. And maybe he hasn't liked my looks in the past, so he was like, listen, please dress up properly and come. So I wasn't sure which it was, but I was under tremendous pressure. But I can see most of you have killed it. Absolutely. Did you like the red carpet outside? It's absolutely fantastic. Yeah, absolutely. So everyone, we would like to present a small memento, a token of our appreciation to Sound and Vision Studios for always being such great partners, support, sponsors for India Voice Fest. A few years back, we started the Leela Ghosh Memorial Award in memory of very dear Leela ji. And this year, we have two people who are being given this award as a show of respect and love from Sound and Vision Studios. And I'm going to call upon Karnel Singh Birdi ji and Sajjad Chaudhary ji on the stage. कर्नल जी तो खैर इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता, कईयों की रातों की नींद खराब होती है,
जब उन्हें कर्नल साहब के साथ रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि ही इज सच अ फैंटास्टिक टास्क मास्टर एंड सर्जन चौधरी जी, Mona, why don't you tell us about that? So ये आप तो छा गए बिल्कुल, मतलब मैंने बोला मैंने इनको बोला था सूट बूट में आना शादी का सूट निकाला, वेरी गुड, आप अभी भी फिट होते हो उसमें, क्या बात है। फिट इसलिए होती है उन्होंने ये नहीं कहा कौन सी शादी का सूट निकाला। आपको याद रखना मतलब मुश्किल नहीं है। So Karnalji and Chaudhary ji, for many of us here, were there right at the start of our careers. When my mother first started working with Ashinga and Aradhana, directing Jurassic Park, they were the engineers who were recording us. And I cannot tell you, that was way back in 93. Haji. Oh, hi Vishwati. She was one of the voices of that film. So yeah, and you know, I mean, it's unimaginable what we have learned from them. And even my mother used to acknowledge how much she's learning from them technically while she's directing. So it's you know, very often, unfortunately, the sound engineers that are working with us, we learn so much from them. I have learned so much from every technician I've worked with, whether it is a director, whether it is a sound engineer. And they are the ones honing our skills all the time, but they tend to go unnoticed and unsung. They are the unsung heroes of our industry. So everyone who would come to record would say, "अरे बाप रे, आराधना चलना है। ये कर्नल जी के पास एक फिल्म डब करना मतलब ये 3-4 फिल्म के बराबर है।" So बुखार आ जाता था सबको. But the amount he has, I don't think any other engineer has made me do hundreds of retakes of the same line just to say it properly. Firmly bolo, ekdam bachchi lag rahi ho, sound like a woman. All of these, so many things, you know. It's what, 30 years now. So it's hard to remember everything, but I can never forget the contribution these people have had, not only in my mother's life, not only in my life, in the life of Sound Vision India, Sound Vision Studios, but many people here. I mean, raise your hands, those of you who have worked with him. See, so many of them. कितने लोग हैं जिन्हें आपने सिखाया है सब. ये पहली बार मेरी लाइफ का ये एक अचीवमेंट है जो मोहन जी ने हमारे लिए सोचा है. और ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो मतलब पर्दे के पीछे गायब रहते हैं, जिन्हें कोई पहचान नहीं मिलती. इस मंच के जरिए हम लोगों को, आप बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ नहीं मिल पाता है, अब मिलना शुरू होगा. ये टॉकबैक के पीछे तो शेर है. टॉकबैक नहीं है. कुछ भी दबा दीजिए, आपको लगेगा टॉकबैक. बहुत किस्मत है कि मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ. बहुत अच्छा लगा, याद किया. And let me tell you, of course, they have been sound engineers for the longest time, 30-40 years now in the industry. Worked with all the greats, all the most celebrated actors are very respectful of them. They love working with them. But today, they are some of the leading Foley artists in the industry. They have won numerous awards, be it Filmfare, be it IFA, maybe even the Oscars, NPSC, NPSC. So some of the Hollywood awards because of the people they work with. So they are really celebrated Foley artists now. Congratulations.
Mona, thank you so much, and I hope you're not leaving us now. Lovely. Absolutely. Yeah, totally. Hemang Sharma once again for the next set of awards, and after that we have someone very special with us in the audience who is going to come up and in just a bit. So, दीजिए बढ़ते हैं आगे अवार्ड्स के सेक्शन में। जब टेलीविजन पर हम एड्स को देखते हैं तो कई बार हमारी आंखों को मोहित कर लेते हैं विजुअल्स, but then there's so much more to that, and that's what we know when it comes to the voices that are there in the TV commercials, and that's very much the segment we're going to address, where I would like to request Mr. Anirban Deep Datta, the creative director from Pixel and Ratio, to please come on stage to hand over the awards for the TV promo voice categories. Mr. Anirban Deep Datta, hands together, please. Mr. Anirban Deep Datta, being the creative director of Pixel and Ratio, has been a part of the jury panel, and he has been going through the entire process of evaluating and giving an ear, not just the ear when we say physically, but then his heart and soul, so that he can make sure that all the intricacies of the voice are well evaluated. Welcome to the stage, sir. Welcome to the stage. We also have the stalwart voice artist Dishi Tuggal with us. Dishi ji, can we have you also on stage to present the awards, please? In fact, can we have Deepal Dada, can we have you also on stage, please? Deepal Ganguly, everyone. We would request you to please take center stage. So please set the stage. Awesome. So let's go ahead. I will be only announcing the category while the names will be announced by our special guests here. The category is the TV promo voice in Hindi. The winner is Man Over to You. My favorite, Ankur. That's the spirit. हम इसी का इंतजार कर रहे थे, एक मूव तो होना नहीं चाहिए. Sir, अगली अवार्ड का नाम आप लेंगे. The category is TV commercial voice in Marathi. The category is TV commercial voice in Marathi, and the award goes to Piyali Banerjee. Piyali Banerjee for the project Lakme 95 Primer Cosmetic with Lip Color. So Piyali ji, go on the stage. TV commercial voice, Marathi. Congratulations again. Let's go to the next category. The category is the award for TV commercial voice Hindi male. The award goes to Lalit Agarwal. Calling on stage, Mr. Lalit Agarwal, the project details
11 Circle. Then we have Mr. Lalit Bhagwan on stage who takes away the award for TV Commercial Voice Hindi Male. Congratulations, Lalit. Oh yeah, raise the volume, people! Oh. That's the spirit. Keep your hands together. We are going to the next category. अगली category है TV Commercial Voice Hindi Female. अगली category है TV Commercial Voice Hindi Female, and the winner is. Guess who? Pamela. Put your hands together for Pamela Javeli. The project she did was Pure Hit Copper UP. And Pamela definitely scored this well. Thank you so much. Thanks a lot, all three of you, for gracing the stage and taking it further. Thank you so much. We have another award to be given away. The next one, I would like to invite my very dear friend Rahul Patil, Associate Director Production, Audible India. Rahul Patil, an absolute veteran of the industry, also on the jury for the India Voice Press Award 2022. And this is for TV Commercial Voice English. And the winner is? It's Rahul Mulani. Rahul, do we have Rahul here? Rahul is supposed to head to the venue from the airport. He is coming in from Jaipur, and he said that 6:30 tak mein pahunch jaunga. So Rahul is not here. Can someone accept the award on Rahul's behalf, please? Melvin? Can I accept it on his behalf so that I can get to hold this? This is the only time I will get to hold the award as if I received it. Okay, everyone, मैंने कहा कि कोई बहुत खास है हमारे साथ जो बहुत देर से हमारे साथ हैं और मैंने सोचा कि जो सबसे स्पेशल चीज है मीठा वैसे भी खाने के बाद खाते हैं और इनकी आवाज का मंत्र क्या है ये तो यही जाने और ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together for the one and the only Mantra. So भाई मंत्रा कौन है जो मंत्रा को नहीं जानता एंड मंत्रा अलग-अलग किरदार निभाते हैं. He's a very popular voice artist. She's been a fantastic, very popular radio anchor. He's also a fantastic TV anchor. But मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है मंत्रा के अलग-अलग किरदारों में से मेरे लिए जो सबसे स्पेशल किरदार जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा इज्जत है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में मंत्रा की कंपनी M&M टॉकीज ने ऑडियो ड्रामा और पॉडकास्टिंग की स्पेस
को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, and he has absolutely changed the dynamics of the audio drama scene, and he's helped us get back to the earlier old days of audio dramas with the kind of award-winning audio dramas, whether it's Bhaskar Ghosh or I Hear You or Sonu Sood wala Commander Karan Saxena. Shit. Yeah, Commander Karan Saxena. And what a thing, voice artist and Michael each other. The list is endless, and Mantra and M&M Talkies have absolutely changed. क्या कहते हैं? वो समा बदल दिया पूरी तरह से. तो Mantra, मुझे आपसे सबसे ज़्यादा इसी बारे में पूछना है कि how did this come about? Your entire foray into audio production. First of all, thank you so much, Darpan. Thank you very much, and thanks to all of you, man. What energy in this room, yaar! Wild. वो शुरू का जो आप लोगों का परफॉर्मेंस ऑन स्टेज हुआ, मुझे लगा मैं एक फैमिली फंक्शन में आया हूँ, एंड अब समझ में आया फैमिली फंक्शन है. This is an extended family, isn't it? With all our seniors sitting right in front of us to bless us, with all the wonderful guests, is Mona around here somewhere, the God woman right between us, and every one of us. Thank you very much. मेरे लिए कोई this is not really just a random moment for me to be here. I waited to be here. I waited to be here. In fact, my partner Shimona is right over there. She would agree with me. मैं 2-3 साल से जब भी मैं इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में पढ़ता था, मैं साउंड एंड विजन जाता था तो पोस्टर देखता था, तो मैं शिमोना से पूछता, यार ये लोग हमें क्यों नहीं बुलाते यार? हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इतना कुछ नहीं बुलाते. मैं वेट करता था दर्पण के आसपास से ऐसे कुछ मैसेजेस देखते हुए इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, maybe he would notice me somewhere. यार मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, इंडिया वॉइस फेस्ट मेरी शादी नहीं हुई. जो मैं आप लोगों को इनवाइट, अरे आप लोग आओ यार, आप लोग जुड़ो, क्योंकि यार आपका प्रोग्राम. Not for anything else, Darpan, for the simple fact of the matter is, thank you for respecting us. Thank you for giving respect to this fraternity that deserves so much more. जहाँ तक आपकी बात है ना, that's a very valid point. क्या होता है, किसी भी जब एक फिल्म बनती है तो आपने कभी सुना है कि एक फिल्म में इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार्स कास्ट कर लिए गए? So you get the drift. So the whole idea is हमारी इंडस्ट्री में इतने लेजेंडरी परफॉर्मर्स हैं, वॉइस एक्टर्स हैं, और इट इज सो इम्पोर्टेंट कि ओवर टाइम हम धीरे-धीरे हर साल कोशिश करते हैं. But God bless India Voice Fest, man. God bless Darpan Mehta. God bless this family. Thank you for doing what you do, man. I've been a part of so many different forms of performing arts. I started, of course, with radio. This stage I've performed at so many plays. रंगशाला के मंच पे बहुत से नाटक किए हैं, सिनेमा, फिल्म, सारी चीजें, सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्रों में मेरे काम करने के बाद एक चीज जानिए, my heart still belongs to voice here. My heart still belongs here. I belong to the voice industry. For some reason why I feel much more better. I just saw the one, I almost felt emotional for a minute back because the memorial award that you guys just gave away, and what you spoke about people who are behind the scenes, my sound designers, the sound engineers, the technicians who make us who we are. My team M&M Talkies is right over here somewhere. Make some noise, M&M Talkies. और सबसे पीछे हम खड़े वाली जो टीम वहाँ पर बैठी हुई है, Manish Sharma, Shadab, Hashmi, and everybody over there. These are the people who made M&M Talkies what it is. The initial question that you asked is because यार बड़े हुए वो हवा महल सुनते हुए, वो उस ऑडियो से कितना को पता है हवा महल के बारे में? Of course यार, come on. Fantastic. Yeah, हवा महल, Shrupa ji is over here, everybody is there. मैं कल Of course मैम, हमारे पास टेप्स रखी है मैम, आज भी वो पुरानी टेप्स, उस किस्मत अच्छी कि उस दौर से पले बड़े जेन जी से पहले वाली जस्ट वो जो दौर था मिलेनियल वाला, जहाँ पे फिल्मों की ऑडियो कैसेट्स आती थी मैम. शोले देखने से पहले मैंने शोले सुन ली थी. तो जय और वीरू मेरे लिए बच्चन साहब और धर्मेंद्र नहीं थे, वो आवाजें थी. वो जो ऑडियो कैसेट्स आती थी ना, दिलीप कुमार के डायलॉग्स, फिल्मों के डायलॉग्स वाले. So I thought that made a lot of impact on me. And that's the reason why I got a chance to make audio plays. मेरा बड़ा मन था ऑडियो के जरिए लोगों को दुनिया दिखाना. That's why we call it Come See the Sound. And I'm very happy that I got a chance to do that. And I've worked with a lot of people over here. And बड़ा मजा आ रहा है उन लोगों को यहाँ पे देखते. Amrita's sitting over here, Ashwin Mushran's over there, Rajesh Kava is over there, all of them. So thank you for being who you guys are. Yeah, thank you for being who you are. That's a wonderful one. Thank you for doing such great work as an artist. And now as an audio content producer,
So we are absolutely delighted to present you with a little memento from India Voice Fest for all the great work that you have done, and especially for the resurgence of the audio drama space that you have brought about. And we wish you fantastic luck ahead. And I hope as a company, as an audio producer, you work with a lot of voice talents in times to come. Thank you, Darpan. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. May the audio industry, voice industry live forever. You guys are an extended family. Thank you very much. God bless you all. Thank you, Mantra. And now I'm going to call upon one more very, very special person on stage. One of the most heard, loved voice actors that we have in the industry. कोई गेस्ट है तो मैं क्लू देता हूं. बड़े भैया क्या है? बड़े भैया दिमाग की बत्ती, सौरभ चक्रवर्ती. If only I could do it as well as Saurabh does it. Saurabh Chakraborty. थैंक यू. ये बहुत पुराना शब्द है थैंक यू. यहाँ पे मेहमान जितने आए हैं वो सबका स्वागत है. मैं फिर से स्वागत करता हूँ सबका. लेकिन जहाँ तक सवाल है दिल की बात करूं तो अवार्ड मिलना ये सम्मान है, जिंदगी है. जिस मकसद से हम कभी मुंबई के लिए सफर करने के लिए ट्रेन में चढ़े थे, शायद आप भी चढ़े होंगे, आपको भी दिन याद होगा. और लोकल ट्रेन में जाना, अंधेरी स्टेशन उतरना और 2 रुपए बचा के लोखंड वाला निकलना, फिर वो ऑफिस में जाना. वहीं पे मैंने शुरू किया था, देखा था ये कोशिश. लेकिन वो बंद कमरे में रोते रोते पूरी दुनिया को इमेजिन करना, ये है एक डबल आर्टिस्ट का काम. जैसे ऋषि मुनि अपने अंदर ध्यान में बैठता है और कुछ लोग को याद कर सकता है, एक डबिंग आर्टिस्ट में इतनी ताकत होती है. वो एक रूम के अंदर बैठ के, शाहुल हमीद के स्टूडियो में बैठ के, दर्पण जी के साथ बैठ के, मोना शेट्टी जी के साथ बैठ के, वो अमेरिका में अरे भैया खाली पे दिमाग की बत्ती नहीं जलती. ऐसा मत समोसा खाओ, शुरू हो जाओ. यार ऐसा मत करो यार. इंडियन फेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल में आए हो यार, समोसे तो खा के लेना पड़ेगा. पूरी बाबा हम और का विषय ना तो दिवाई. ये बात ही तो कंट्री में बच रही है. पूरे पॉसिबल. अम्मा से याद आया, मेरे लिए अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, सबके लिए बड़ी बात है. मैंने भी अवार्ड लिया है अम्मा ने सबसे, बहुत लोगों से, और सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला है कि आज मेरी माँ को मैं लेके आ पाया. उन दिनों नहीं आ पाया, सिर्फ कुछ सेकंड लूंगा मैं. तो आज मेरे लिए ये भी सबसे बड़ा अवार्ड है कि मेरी माँ मेरे साथ आई है. अरे उसी की तो दूध की ताकत है. हम तो बोलते हैं, हमने शुरू किया था दुर्योधन की आवाज से, हे पितामह, मुझे उन भिखारी पांडव का शब्द चाहिए. हठ न कर पुत्र, हठ न कर पुत्र, हठ न कर पुत्र. वो सांसें टालना, वो मुकेश खन्ना की आवाज में शुरू किया था. तो वो दूध की ताकत वाली माँ को लेकर सामने आया. उन सभी के अंदर दूध की ताकत है. उसे सच्ची मिट्टी की ताकत बोल रही है. जिंदाबाद. अरे कम से कम मैं को कुछ भी बोले कोई मिमिक्री में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना. दर्द की ठीक आदमी नहीं है बोल रहा. अरे अवार्ड करते हैं, अवार्ड को किधर अपने टीम अपने टीम. लेकिन उन्होंने साबित कर दिया,
विनोद जी नमस्कार आपको। सैल्यूट करता हूँ आप जैसे लोगों को मैं कि आपके लिए हम यहाँ पे खड़े होने के काबिल है। आप है राजू, राजू काबा है संजय के लिए, ये लोग है मेरे लिए, ये साहब लोग हैं। दर्पण जी इनके लिए हम यहाँ पे खड़े और किरण मोटवानी जी थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए। और एक खास बात बताओ, यहाँ पे आकर मुझे बहुत कुछ मिला, कभी मौका मिलेगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे चैनल भी है, उनकी भी काबिलियत, उनको भी अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि चैनल जाते हैं हम लोग तो something new. Yeah. एक आदमी पान वाला है कैसे बोलेगा ना, है पान ले जाइए घर में खाने के लिए, खाने के लिए नो समथिंग न्यू। पान वाला न्यू क्या बोलेगा, कुत्ता वाली नो समथिंग न्यू। समथिंग न्यू। और हमारे उसके बिना ये महफिल अधूरी है। वो कैरेक्टर है, आप सभी जानते हो कुछ लोग उनको। कोई आर्टिस्ट अगर स्टूडियो लेट आता है वो बेचारा अपने आप को बालों से लगता है। वेंडर की क्या हालत होती है, उनको अवार्ड मिलना चाहिए, मिलता ही है। किधर है आप पहुंचे, गोरेगांव पहुंचे, वहां से निकल रहे गोरेगांव पहुंचे। कोई टेंशन कोई ना, आराम से आना, आराम से आना, डोंट टेंशन। एक मिनट बाद किधर पहुंचे, गोरेगांव से गाड़ी स्टार्ट करते गोरेगांव पहुंचे। तो ये पेंडिंग रखता हूँ, कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, अगले साल फिर अवार्ड लूंगा, यहाँ पे आऊंगा और कुछ मिलने लगेगा, ये जोश में जाऊंगा जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। थैंक यू सभी को। Thank you, Saurabh Chakraborty, everyone. Thank you. जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो पता चलता है कि किस तरह की सीमाएं हमें लांघनी पड़ती हैं, जो हम शर्मो हया में हम कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। वैसे 3 mics I don't mind handling, I like more mics around me. Well, coming back to work, टैलेंट हंट का इंतजार हम सबको है और वो अभी बस कुछ ही पलों में शुरू होगा। मगर वो जो कुछ पल है, उस पलों में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे बुलाना है संकेत म्हात्रे को, बिकॉज वो हमें बताएंगे कि ये जो यहाँ पर टेबल है और इस टेबल के बारे में उन्होंने पहले बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन का, वो किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं आज की शाम में। बिकॉज आफ्टर दिस, वंस यू नो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, वी आर गोइंग टू गेट इनटू द टैलेंट हंट एंड रात बाकी बात बाकी और बहुत कुछ बाकी। संकेत आ जाइए, the mic is all yours. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था शो से पहले, एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे आपके सामने एक जो टेबल है, इस पर कई सारे आर्टिस्ट के किए हुए कैरेक्टर्स के कुछ मेमेंटोस हैं, कुछ एक्शन फिगर्स, ग्राफिक नॉवेल्स, कुछ पोस्टर्स हैं और हम एक साइलेंट बिल्ड कर रहे हैं। वहाँ पर नोट पैड्स हैं, पेन्स हैं और कुछ एनवलप्स रखे हुए हैं। आप किसी भी एक्शन फिगर या किसी भी आइटम का बिड अमाउंट देख लीजिए, दैट्स द बेसिक बिड। उसके ऊपर आप अपना बिड रख सकते हैं एंड एनीबॉडी कैन बिड। आई काइंड ऑफ कैटेगराइज इट इनटू 4 F's, व्हिच इज फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस या फिर फेलो कॉलीग्स, कोई भी इसमें बिड कर सकता है। एंड द हाईएस्ट बिड एट द एंड ऑफ द इवनिंग, आर्टिस्ट के साथ आप यहाँ होंगे मंच पर, वो आर्टिस्ट उस मोमेंट को ऑटोग्राफ करके आपको सौंपेंगे और आपकी जो बिड अमाउंट होगी, जो सारी बिड अमाउंट हमें मिलेगी, वो इंडिया वॉइस फेस्ट की तरफ से हम 100% एक सोशल कॉज के लिए डोनेट करेंगे। सो प्लीज कम अहेड एंड नॉट ओनली टेक अवे अ मेमोरी ऑफ योर फेवरेट आर्टिस्ट बट आल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ सोशल कॉज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय इट।
चलिए बढ़िया है। आपने उसके बारे में जो सुन लिया ना, उसके बारे में एक्शन भी लेना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है। कृपया जल्द से जल्द वो कीजिए। और अब जिसको हम कहते हैं फुल पावर, उसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। तो वेरी वर्ड फुल पावर एक्सप्लेन्स इट ऑल। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द मल्टी टैलेंटेड Rajesh Kumar to take over the stage and take you through the Talent Hunt 2022. Sugar Media presents India Voice Fest, the Indian Voice Industry Conference and Awards. Over to you. देखिए फुल पावर जादू दिखाता हूँ आपको। बहुत कम वॉइस एक्टर से जादू दिखाते हैं। देखो मैं यहाँ से आया, ओ मम्मी गलत रास्ता है। यहाँ से ओ ये भी गलत रास्ता है। वहां से अरे ये भी गलत। सही रास्ता मिलता कहां से? इंडिया वॉइस फेस्ट, फ्रेश वॉइसेस, जो टैलेंट हंट है, ये इसी का सही दरवाजा है मेरे भाइयों, है ना। कई बार क्या इंसान गुमराह हो जाते हैं यहाँ वहां न जाने कहां कहां। तो मेरे ख्याल से ये आज की तारीख में सबसे बेहतरीन दरवाजा है। तो मेरे पास कुछ नाम है। कृपया आप अपनी अटेंडेंस बताएं। आप आए हैं मुंबई में, ओके। नवनीत कुमार कहां है? नहीं है, ओके। प्रियंका अविनाश, प्रियंका जी आप मौजूद हैं? नहीं है, वेरी गुड। हाँ, विशेष वैद्य है, मौजूद है, वेरी गुड। मयूर चंद्र, स्वर्णिमा दाते रांगड़े, ओके। या फरनाज बारिया है या ममता जाधव, रूना चांद जी, प्रतीक कुलकर्णी, अनुज सेन, नीरव व्यास, चौथा साल है इंडिया वॉइस फेस्ट में टैलेंट हंट का। बहुत सारे ऐसे कलाकार जो हर साल आए हैं। आपका नाम बोला नाराज है क्या? पता नहीं मुझे नाराज है, कभी बातों में शांत हो जाता है। नाम पुकार रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए जो भी यहाँ पर उपस्थित है। नवनीत कुमार, प्रियंका अविनाश, विशेषा वैद्य। पहले नवनीत कुमार ने 3 नाम बोल दिए हैं। We are looking forward Priyanka Avinash to be on stage. प्रियंका, क्या आप यहाँ पर हो? अपनी आवाज बुलंद करके कम से कम बता दो, क्योंकि हिलते हुए लोगों में समझ नहीं आ रहा है कि कौन यहाँ आ रहा है तो कहाँ जा रहा है। प्रियंका आ रही है। यस, थैंक यू प्रियंका। वो एग्जैक्ट वास्तु के हिसाब से उन्होंने सीट पसंद की थी, वहां रसगुल्ले में बैठी थी। अब आ गई, आइए प्रियंका जी। पहले तो उनके लिए तालियां होते हैं प्रियंका जी का क्यों? प्रियंका जी कहाँ से? सुपर। तो पूरी तैयारी के साथ आई? हाँ। एक नंबर, आग लगा दीजिए, शुरू हो जाएगी, आपका टाइम शुरू हो रहा है। थैंक यू सर। भारत इस देश और इसकी संस्कृति को सीमाओं से बांधा नहीं जा सकता। सभ्यता और इतिहास का
महासागर है ये देश, जहां सैकड़ों राजवंश और हजारों राजाओं का प्रभाव नजर आता है। यहाँ के धर्म, कला और परंपरा में इसी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है यहाँ का खाना। Located on the banks of the Tungabhadra River, Hampi is a historical city in the Bellary district of Karnataka. A dynamic and dramatic place, Hampi is dotted by several temples, ruins of palaces, remains of aquatic structures, ancient market streets, and royal pavilions and bastions. अरे बाप रे, ये तो कितनी बड़ी औरत स्त्री है। हाँ माँ, क्या ये हमें पकड़ के ले जाएगी? नहीं बेटा, अरे तुम लोग बैठे क्या हो? चलो भागो यहाँ से फटाफट। अरे मैं भी तो बैठी हूँ यहाँ पे, कोई मेरा भी तो हाथ पकड़ो। बच्चों, तुम दादा दादी के साथ रहो, मैं जाके देखती हूँ कि तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। बहुत बहुत तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। That was Priyanka Avinash. We would like to call upon the next Vishesha Vaidya to be here on stage. और मैं अगला नाम पहले ही बता देता हूँ ताकि आप यहाँ पर करीब आके तैयार रहे। विशेषा के बाद मयूर चंद्र और स्वर्णिमा दाते रानडे, आप दोनों को बुलाया जाएगा। Mic is all yours. Take this one. Full power, sir. और all the best. Thank you, sir. Yes, yes. एक नंबर, शुरू हो जाए। बड़े बॉस के घर में आपका स्वागत है। सुबह 7 बजे। Good morning, मेरे बॉस। अरे जॉर्ज, तुम क्या ढूंढ रहे हो? डायनासोर। दोपहर 1:30 बजे। ये क्या मोटू, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है? अरे मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या करूं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ करो। अरे क्या यार बड़े बॉस, एक खाना बनाने का काम भी उसको दिया जिसको खुद भूख लगता है। अरे यार अच्छा वो डोरेमोन तुम आ गए, पर जल्दी कुछ गैजेट निकाल। पर मुझे तो गैजेट यूज करने के लिए सख्त बना दिया गया है। जॉन बनेगा डॉन, बता दे वो है कौन? अरे किसने मना किया है तुझे? मुझे बड़े बॉस ने मना किया है। अय्या, don't fear when chicken is here. अरे ये तुम सब हट जाओ, मैं बनाती हूँ खाकरा ने, फाफड़ा ने, उंदियों ने, थेपला। थोड़ा बचे तो मुझे भी देना। अब मैं क्या कह रहा था कि ये खाने में बाहर थोड़ा पान हो रहा है तो बहुत मजा आएगा। क्या बोलती हो देखो? अरे पान खाए से यहाँ हमारो सामी सूरत और जीत लाला, हाय हाय मलमल का कुर्ता। अरे ये सब तो चलता ही रहेगा। अरे हम मिलते हैं थोड़ा ब्रेक के बाद। जय बात, तालियां, फुल पावर। सारे जूरी देख रहे हैं ना। थैंक यू सो मच। और मैं मयूर जी को बुलाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सब लोग कान खोल के सुने। मैं ना थोड़ी देर में अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक टिप्स देने वाला हूँ अद्भुत वॉइस एक्टर बनने की। ना आपके फेफड़े खुल जाएंगे उससे। ओके मयूर प्लीज कम। मयूर के बाद स्वर्णिमा तैयार रहे। So I just take 10 seconds. This is my very first time I'm coming on stage in my life, and मैं आप सब दिग्गजों के सामने perform कर रहा हूँ. I'm very glad. I'm very nervous at the same time. So thank you so much for giving me this opportunity. कभी कभी जीवन में कभी ना कभी तो शुरुआत होती है। ये लो शुरू। Ladies and gentlemen, if you are listening to nothing but the best of all days, you are listening to India Voice Fest. So what are you waiting for? Grab the tickets to see me live in concert. India Voice Fest लाया है आपके लिए एक अनोखा मौका। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की दमदार आवाज को पूरी दुनिया सुने और सराहे, तो
बिना किसी देरी के रजिस्टर योरसेल्फ फॉर वॉइस एक्टिंग टैलेंट हंट और इंडिया वॉइस फेस्ट। अगला स्टेशन इंडिया वॉइस फेस्ट है। नेक्स्ट स्टेशन इज इंडिया वॉइस फेस्ट। बिग बॉस चाहते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स कन्फेशन रूम में आ जाए। अगर वो कन्फेशन रूम में नहीं आए तो उनके अगले दिन का राशन काट दिया जाएगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। ओह यस, ओह या। थैंक यू सो मच। फुल पावर, थैंक यू सो मच भाई। वॉइस एक्टर बनने के लिए पहला टिप, एक मिनट, आपको भी काम में आएगा जीवन में। अवश्य। अविश्वसनीय अलौकिक वॉइस एक्टर बनने के लिए पहला टिप, ध्यान से सुनो। गांव में जाए, शहर में जाए, कहीं भी जाए, दरवाजा खटखटाए और जो भी दिखे उनको कहे कि आपका बेटा है, हाँ है, आपके बेटे से खेती करवाइए, किसान बनवाइए। आप सोच रहे हैं ऐसा करने से मैं वॉइस एक्टर कैसे बनूं? बनेंगे, कनेक्ट करवाता हूं ना। जाइए, कहिए कि आपका बेटा है, उसको किसान बनवाइए, ठीक है? नहीं समझे? बेटा, सन, किसान के लिए जरूरी खेत, संकेत, 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 मात्रा जैसी आवाज मिलेगी। संकेत, सॉरी बहुत घटिया था लेकिन ऐसे आते रहेंगे। नेक्स्ट, अगले कलाकार स्टेज पर आए और वो है स्वर्णिमा दादी रानडे। आप स्वर्णिमा, आप यहाँ पर हैं। स्वर्णिमा के बाद तैयार रहे फरनाज और उनके बाद ममता जाधव। तैयार रहे। अरे डर किस बात का? सारे अपने लोग, सबको मैंने तालियां बजाने की जरूरत। तो तैयार, तालियां बजाएं। आप टूटने से तालियां। आज का भारत बदलता भारत है और इस भारत की बुनियाद है नई सोच, जिस पर अपने जज्बे और जुनून को लेकर कुछ लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बदलाव हमसे है। हाँ, मुझे याद है वो क्लास में हमेशा आगे रहती थी और आज फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ी है। ये है मिस टूटू, माय थर्ड क्लास टीचर। आप सब लोगों के पास तो कितने सारे विनिंग बैचेस हैं, मेरे पास सिर्फ एक है, स्विमिंग का। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। विजय दबे कदमों से हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के कोने में एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी, जो नीलम शहजादी की पेंटिंग थी। ऐसा लग रहा था कि विजय का वो सदियों से इंतजार कर रही थी। और उतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई, चू, और फिर गोलियां चलने लगी। एक गोली विजय के दाएं कंधे से गुजर गई और फिर से गोलियां चलने लगी। एक गोली विजय के बाएं कंधे से गुजर गई और फिर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ खामोशी और फिर पीछे से एक हाथ आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड दैट वाज स्वर्णिमा। और हम बुलाएंगे फरनाज को, मगर उसके पहले आपकी कोई टिप है? दे दूं? अरे बिल्कुल। एक और बहुत ही अनमोल टिप, कोई किसी को देना फ्री में तो बिल्कुल नहीं देता, मैं दे रहा हूँ दिल खोल के लिए, ठीक है? बहुत ही बड़े बड़े अद्भुत कैरेक्टर्स आपको डब कर देना। आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। मंडे को उपवास करना पड़ेगा, या मंडे को कुछ भी खाना ना, फास्ट फूड ना, कुछ भी ना, मंडे को उपवास करना पड़ेगा। और कौन बोला, क्या बोलो यार। और जो एक बहुत ही ज्यादा बिकने वाली शाम को खाने वाली आइटम है मोमो, उसको तो तत्काल ना बोलना। वो ना शिट्टी जैसी आवाज पाएंगे आप। तो ये दो चीजें रियल लाइफ सेट हो जाएंगी। Awesomeness happening, and for that अपने वॉइस की है तो फरनाज दारिया, आइए कोशिश कीजिए कि आप और कौन सी आवाज को जान दे सकती है। फुल तैयार फरनाज जी? यस सर, फुल पावर। चल शुरू। There are those who demand respect
out of the position they occupy. And then there are those who earn respect. Colonel Sonam Wangchuk may come off as a soft-spoken, light-hearted man, but the charming smile conceals a steely resolve that have shouldered mountains of responsibilities. This is the story of the Ladakhi soldier who attended the call of duty beyond all measures. A treasure chest with fun and exciting prizes awaits you as Disney Super School League is back in an all-new season. The clock is ticking and seats are filling in fast. Download Baiju's app now to register for Disney Super School League Season 5. There was a caterpillar. He had a lot of feet. All he did was eat and walk and eat and walk. Yum, yum, yum. On every pair of feet, a pair of tiny shoes he wore. They stopped his feet from getting really, really sore. Then, one day, he didn't want to walk or eat at all. And suddenly his shoes felt rather tight and rather small. Ouch! He had a quite surprising urge to find them all new feet. So he set off through the woods at once, wondering who he'd meet. He found a friendly woodlouse underneath some logs. Oh, hello! Caterpillar asked, "Would you like my wooden clogs?" Woodlouse said, I love them. I think I'll do a jig. Caterpillar said farewell, then set up a twig. Sorry. बहुत बढ़िया, तालियां हो गई। ये आसान काम नहीं होता जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आप एस्पायरिंग वॉइस एक्टर हैं, तो यहाँ आकर इतने दिग्गजों के सामने ये करना अद्भुत चीज है। Yeah, that's amazing. Very commendable. Mamta Jadhav is the next contestant for Talent Hunt. ममता के बाद रूना चांद और प्रतीक कुलकर्णी तैयार हैं। रूना और प्रतीक तैयार हैं। ममता जी क्या बात है? तैयार? चलिए सुनने को सब बेकार। Okay. When leave applications go out 2 months prior and requests for Amma's special dishes are made, when the top view of your city lighting up warms your heart like nothing else, you call it Diwali. When attempts are made to hide the report card because Akka's fared better than you have, when regrets follow those failed attempts and you're worried because who knows how it might affect the festive shopping that's soon to happen, you call it Diwali. When hours go by discussing fashion trends with friends and the last bench becomes a safe spot for hashtag references on look searches, when getting caught in the act doesn't deter you from carrying on anyway, you call it Diwali. When movie dates are forgotten while planning the big Diwali party with your friends, and being reminded makes your heart skip a beat. When a bit of pleading and shopping is what it takes to make up for the mess you've made, you call it Diwali. When you teach Amma and Appa to twin as the young ones do these days, when there's more joy in shopping for a dear one than just shopping for yourself, and when report cards make no difference to the smile you bring to your little one's face, you call it Diwali. It is a festival of hearts too, you see. And when you let the little joys light up the heart of your loved ones, you call it Diwali. क्या बात है? दिवाली मुबारक हो। ऐसा लग रहा था कि बस ये बोलते रहना सुनते रहे सदियों तक 2028 कम से कम आ ही जाए। तो अगले खिलाड़ी आए उससे पहले मैं एक और इरशाद बनता है, ये तो बहुत ही जबरदस्त हीरो वाली वॉइस चाहिए। हीरो वाली लड़के लोग कान खोल के सुनो। आपको आईने के सामने जाना है और कहना है कि आज मैं एक फिल्म देखूंगा। हर रोज ये कहना है, आज मैं एक फिल्म देखूंगा। और फिल्म का नाम मैं बता दूं, फिल्म का नाम होगा सलमान खान साहब की वीर। आज वीर, आज वीराज जल्दी आवाज मिलेगा। तालियां बनती है सस्ती सुंदर की कौन होती है।
That is a deep insight into the art of voice acting. Don't you miss that. रूना चांद आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कृपया स्टेज पर आएं। जिसके बाद प्रतीक, अनुज और नीरव को बुलाया जाएगा in that order. All the best. First of all, I want to thank Neshma ma'am, my teacher, and all the people who have supported me. तैयार? चलिए, full power. Get my trip ka naya pay and destination service. This makes your trip always easier. Travel with Get My Trip. The number you're calling is not reachable at this moment. Please try after some time. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चुटकी और मुझे ना तितली बहुत पसंद है। इडली नहीं, तितली, जिनके कलर्स होते हैं और वो उड़ते हैं। इडली तो गोलू को पसंद है। इडली? अरे क्या किसी ने इडली कहा? अरे तितली, तू मेरे लिए खाना लाई है। अरे तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आहा हा हा इडली। अब तुम मेरे कैद से निकलकर बाहर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे इस पावर को इस्तेमाल करके मैं पूरी दुनिया में राज कर सकती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह! यहाँ पे तो खाने के लिए बहुत सारे फल हैं। यम्मी यम्मी। बहुत बढ़िया, तालियां। ये जो एनर्जी है फुल पावर यही चाहिए, क्या बात है। बाकी चीजें तो अपने आप बनती रहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और चाहिए? सस्ता वाला। धर्मेश भाई हमारा वाले सामने। एक अद्भुत सुपर हीरो वाली आवाज फिर से ध्यान से यार, ये तो बुक में लिख लीजिए। आपको मैथ्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको एक प्लास्टिक की फटफटी लेंगे रोज, वो बचपन में जो चलाते हैं स्कूटर वैसे चलाना पड़ेगा। नहीं समझे? मैथ्स में स्ट्रांग मतलब नंबर्स मतलब अंक और प्लास्टिक की स्कूटर मतलब अंकुर जैसी आवाज। कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा यार, फुल पावर। Round of applause for that. और इसी के साथ हम बुलाएंगे प्रतीक कुलकर्णी को on stage to show his talent. प्रतीक मेरे भाई, फुल पावर। कहाँ से? सर मैं कोल्हापुर से। जय बाबा। तैयारी के साथ? जी। ओके, आ गया। एक समय की बात है, बहुत समय पहले उसी काल के छात्र छाया में बसा एक साम्राज्य था जिसके राजा थे वीर विक्रमादित्य। एक बार राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य में भीषण अकाल पड़ा और प्रजा भूख और प्यास से मरने लगी, जो देखकर राजा विक्रमादित्य विचलित हो उठे। ऐसे में एक तांत्रिक दरबार में आया और राजा को बोला, ए राजन, विंध्याचल पर्वत की एक गुफा में एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक शव है जिसमें महापिशाच बेताल की आत्मा है। मुझे बेताल लाकर दे, मैं तेरे इस साम्राज्य को अकाल मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर विक्रमादित्य निकल पड़े। यात्रा लंबी थी और भयंकर विपत्तियों से भरी हुई थी। विक्रमादित्य, याद रखना, बेताल तुझे एक कहानी सुनाएगा और उस कहानी से जुड़ा एक प्रश्न पूछेगा। यदि जवाब जानते हुए भी तू चुप रहा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और यदि तुमने सही जवाब दिया तो वो शैतान उड़कर वापस चला जाएगा। विक्रमादित्य, इस दुविधा से बचने का केवल एक उपाय है, बेताल की कहानियों में उलझना मत। आओ विक्रम, एक कहानी सुनाओ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए इसके लिए। वाओ। बढ़ते हैं अगले कलाकार की ओर और उनका नाम है अनुज सिंह। अनुज। अनुज, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से। तैयारी के साथ है? अरे सबके कान खुलक रहे हैं आपको सुनने के लिए। तैयार? शुरू।
अच्छा है इंडिया वॉइस फेस्ट 2022 बहुत अच्छा है। हाँ आ गए मेरा तमाशा देखने, मेरा टैलेंट का तमाशा देखने। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा बोलूंगा, थोड़ा मुंह बनाऊंगा, देखते रहोगे, खाना खाओगे, घर चले जाओगे। ए नाना रेड्डी, अगली बार से तूने मेरे आर्टिस्टों को डराया ना तो तेरे ही घर में घुस के तेरे ही लोगों के सामने तेरा वो हाल करूंगा। क्या हाल करेगा तू? मैं तो ऐसे ही बस मजाक कर रहा था और कहा बहुत जल्दी आप लोगों की छूट हो गई जेल से। वैसे माशाल्लाह तेरे मेरे तो बड़े मजे की करारी ठंड ठंड हो रही है। साहब ये क्या बोल रहे आप? हम तो सोचे थे कि आप नाना और रेड्डी का अलग अलग कर दोगे साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या एक्सेप्टेबल है बता। अच्छा लगता है ना जब मिलता है कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाई रिवॉर्ड पॉइंट्स अब सेविंग अकाउंट्स के कई सारे ट्रांजैक्शंस पर। ICICI बैंक, ख्याल आपका। Looking for a great adventure in the Himalayas? Well, that's easy. For a jam-packed adventure day on the water, it's got to be Sea Sports. A great day for the whole family. When the world is out of balance and is slipping towards disaster, only a desperate voyage across oceans of time and space to the limits of the imagination will lead to a secret power that can restore harmony. Thank you so much. बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। Good job. अभी आखिरी खिलाड़ी आएंगे, नीरव मेरे ख्याल से तैयार है। That's right. लेकिन उससे पहले एक हल्की सी, मुझे अभी 150-200 मेल आ रहे हैं। पब्लिक की डिमांड पे एक तो बनता है, तो अगर आप लोग जवाब जानते हैं कृपया ना कहें, क्योंकि ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है? मेरे बगल में एक एस्पायरिंग वॉइस एक्टर थे, बैठे थे। उन्होंने कहा कि सर रोज कोशिश करता हूँ, रोज प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती है, लेकिन पता नहीं आप जैसे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं या जो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं उनके बगल में हम बैठते हैं तो पसीने छूट जाते हैं, डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। गुजराती में डरपण लागे छे सर। तो डरपण लागे तो डरपण मेहता जैसी आवाज आएगी ना 100 ग्राम आएगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम कल, अगले खिलाड़ी आ जाए। नीरव, take over. तालियां। नीरव, आपका स्वागत है। आखिरी खिलाड़ी आप हैं, तैयारी के साथ म्यूजिक बंद किया जाए। शुरू। फर्स्ट एक्ट। नोट नहीं तो क्या, कुछ नहीं, नजदीक या नहीं तो क्या, प्यार नहीं, खाने की महक नहीं तो क्या, भूख नहीं, रियल लाइफ नहीं तो क्या, जज्बात नहीं, तो सोचो नोट नहीं तो क्या, आना जाना भी नहीं। अब ओला मनी और कार्ड पेमेंट के साथ नहीं रुकेगा इंडिया, कैशलेस चलेगा इंडिया। डॉक्यूमेंट्री नरेशन। केदारनाथ उत्तराखंड ये छोटी चारधाम यात्रा के 4 स्तंभों में से एक है। कई तीर्थयात्रियों के लिए ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हर साल हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में आते हैं, जिसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, और हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। समझा जाता है कि पुराने समय में तीर्थयात्री अपने पापों को धोकर उनसे मुक्त होने के लिए यहाँ आते थे। हर साल लाखों लोग उत्तराखंड की 4 तीर्थों की यात्रा यानी 4 धाम की यात्रा के लिए आते हैं। कैसे मिहिर ने अपनी पत्नी तुलसी को मारा। मारने के बाद घर से निकलते वक्त बाइक से जा रहा था और तुलसी ने अपने पति को पकड़ पकड़ के मारा। देखते रहिए कार्टून नेटवर्क पर रोज शाम 7 से 8। इतना प्यार से इतनी अहिंसा कौन करता है? तो थैंक यू सो मच। और जो यहाँ अपनी कलाकारी दिखाकर गए हैं, दिल थाम कर बैठे हो, उन्हें जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा। और मेरे ऐसे ही नुस्खे सुनने के लिए अगले साल फिर मिलेंगे। फुल पावर। थैंक यू सो मच।
Thank you so much. Thank you so much. We really appreciate his time, effort, and no doubt the exceptional tips that we get from him. Trust me, nobody in the industry has that kind of an insight that he does, and we do value that at the same time. बढ़ते हैं अब इस मौके पर टैलेंट हंट के अपनी अपनी कोशिशें हो चुकी हैं. जजेस अपने स्कोर्स सबमिट कर रहे हैं. उन स्कोर्स को पूरा समन्वय करके, इवैल्यूएट करके, टोटल करके जब रिजल्ट्स आएंगी, उसके पहले हमें ये जानना है कि ये जो सब अभी हुआ है वो इतनी आसानी से नहीं हुआ है. ऑब्वियसली महीनों की, सालों की मेहनत होती है और उसमें इतने सारे लोग जुड़ते हैं और इसीलिए जब हम बात करते हैं इंडिया वॉइस फेस्ट की, वी गो अहेड विद शुगर मीडिया प्रेजेंट्स इंडिया वॉइस फेस्ट एंड दैट्स वेयर द शुगर, द मिठास, the love, the team that comes together to contribute their expertise, their time, their effort to make such an evening happen and the online sessions to happen. It's our time to ensure. देखो इस शुगर टीम को तो कोई परवाह नहीं, इतना खास ग्लैमर क्रिएट कर रहा हूँ, बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं कोने में, मैं थोड़ा चिल हो जाता हूँ. शुगर टीम को बुलाया जा रहा है स्टेज पर because it's time for us to celebrate, acknowledge and also know that these are the people who've been putting in their time, effort, love, energy, happiness, craziness, madness and all that put together when it comes to an evening called the India Voice Fest 2022. और उसके लिए there's none other than the creator, the curator, the one who's conceived it, Darpan Mehta, to kindly come over on the stage. ये हमें दे दीजिए. Can I have all the sugar team members on stage, please? Everyone. Everyone from the Sugar Media's team on stage. The talent hunt results will be announced in just a few minutes. Everyone. Pradeep, everyone. Deepak, Pallavi, everyone. Yeah. Amol. Everyone, please put your hands together for this beautiful team which created this magic called India Voice Fest. So let me tell you something that थोड़ा म्यूजिक थोड़ा कम कर दो थोड़ा सा. So everyone, please put your hands together for this beautiful team. And the most amazing fact is that almost all of them, most of them don't even work for Sugar Medias. So this is only their pure love. All of us are connected through a common love for sugar and voice acting, and all of them have just come together to volunteer to help out for the event, and that's what makes them special, because each one of them has put in their heart and soul the last few days, and some of us in the last few months, to put this together. So these guys deserve a very, very special applause and a very special place in my heart. And एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ लेकर आ रहा हूँ. आप लोग मैं जाके. Well, the claps have to continue. I won't have to ask for that. Compulsory. इसकी क्या जरूरत थी? Correct.
हाँ मैं ले लेता हूँ, मैं डब्बा ले लूंगा बाकी का, आप चिंता ना करें। धन्यवाद इसलिए, मगर हमने एक जो आपको नहीं पता है वो भी है। wait, there is something. जब हम सब एक साथ स्टेज पर आते हैं तो कोई भी एक अलग है नहीं, हम सब एक एंटिटी है। वो जो एंटिटी है ना, उसका नाम है शुगर मीडियाज। तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट शुगर मीडियाज को देते हुए, ये खास सर आपके परमिशन के बिना बनाया गया। दिस इज फॉर शुगर मीडियाज एज एन एंटिटी। सेंटर स्टेज प्लीज, पोजीशन लीजिए, पोज वोज दीजिए। And this is for the energy, the concept, the theme, the power. And this Sugar Medias is not the people on stage only. This Sugar Medias is all of us together, putting this evening in its physical form. Now, जैसे एक एनिमल सेल होता है, वैसे एनिमल सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उसकी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ज्यादा बायोलॉजी में नहीं जाऊंगा, जल्दी से नाम बताऊंगा। सर जी ये आप दीजिए to the person who is the energy of the team, Kiran Motwani. She's the backbone totally. और सर अब ये मैं छुपा के रख रहा हूँ, आइए सेंटर स्टेज। एक खास इंसान है जिनको ये देना है, और वो इंसान कौन हो सकते हैं आप गेस कर लीजिए। And that is none other than, read out the name loud and clear, Daban Mehta. Congratulations. Well, these are the ones that we didn't tell you about. So we first wanted to acknowledge that. The rest of the evening, so please take it further as you have already planned. Ji. So we're going to take over the next acknowledgement to Anand Lale, the one who is handling the technical front. ऑनलाइन के सेशंस जब हो रहे होते हैं, स्क्रीन चेंज होते हैं, टेक्निकली सब हैंडल करना होता है। आनंद हैंडल्स इट पीसफुली बिहाइंड द सीन। Taking it further to Shivani. Shivani has been handling it online as well. She's been doing a brilliant job when it comes to facilitating the entire flow. And a pic with Shivani there. The next one is somebody I have to name. He's like the best guy out here. अपनी तारीफ करने का मौका मिला है, करने दो। हिमांग शर्मा। And Saili Desai, are you here? She's part of the Sugar Media team for years together, and she's still handling stuff outside. Yes, unlike us, she's working, and that's where the energy comes from. Wow, man! तो एक group picture हो जाए, सर जी जरा center stage ले और सब लोग एक मस्त वाला pose दे, थोड़ा ऐसा cool वाला, with your gifts and placards. And say cheese, everybody look there at the cameras. Got that! Thank you. The results of the talent hunt. Very much. We want the results and the jury to be on stage so that we acknowledge the talent and also enjoy this moment where we have all been able to put together such a beautiful evening. See, isn't it wonderful that this stage provides such a straight, simple opportunity for raw talent, and any talent for that matter, to come on stage and share it with hundreds of people at one point of time. You know, there's a lot of fear attached to coming in front of the people or on stage. वैसे वॉइसिंग तो हमारी एक अकेली वाली 4 दीवारों के अंदर, सामने 2 इंजीनियर होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक डायरेक्टर होंगे, हम अपनी अकेली दुनिया में रहते हैं। परंतु जब हम इस भीड़ को पार कर लेते हैं, एक नई ऊर्जा आती है हम में, जिससे हम बाकी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो वॉइसिंग का हो, डबिंग का हो, नरेशन का हो, and so on so forth. The results of the talent hunt are not backstage. The results of the talent hunt, any of the team is here, they are not front stage. So by the time the results come in, I guess I would love to have the judges on stage. जब तक calculations हो रही है, I would request the judges of the talent hunt. लगता है judges भी नहीं हैं यहाँ पे. They are still calculating. I'm asking. Awesome. So here we are. Awesome. So आ गए हैं. The numbers are being calculated. Frederick De Mello, Rahul Sheth,
and Shumon Thore. Please grace the stage with your presence. You have put in a lot of effort, and I can always understand that when it comes to these kind of challenges of putting numbers to art, it's almost impossible. Touch wood. So, on stage, sir, if you have a word or two, we would love to hear that from you too. Kaisa raha experience? Overall experience was superb, hमेशा से रहा. But talents were incredible. Very good talent, and every time the quality of talent is increasing. I think more and more people are getting inspired with this industry, which is happy, which makes me proud. And let's see who wins. A very good evening to all of you, and it's such a wonderful pleasure being here. As always, being a part of India Voice Fest is always very exhilarating, and it's a total honor and such a pleasure to be amongst all of you here, friends and families. Since this is the culmination of today's evening, मैं बस इतना कुछ कहना चाहूँगा कि आज हम सब जो हैं दोस्तों के बीच हैं, right? And I feel there's no bigger relation, no bigger you can say like a bond than friendship. आज हम सबको जो एक छत के नीचे लाया है वो एक दोस्ती का जज्बा, right? और मैं चाहता हूँ इसी दोस्ती के नाम समर्पित कुछ दो लाइनें आपको सुनाऊं, क्योंकि ये तो बनता है, and especially our friendship, our bond with Sugar Medias, with Darpan, with India Voice Fest really goes a long way. So here, can I have the river on the mic a little more, please? So that this is also a heartfelt tribute to a dear friend whom we lost, recently, and we did a lot of work together. So, सुनेंगे तो तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूम तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी जो तेरी खुशी में, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार. That was where the energy comes in. Wow, the results are here, the excitement is up, and I am trembling with the news announcement. Up kar lo, please. Mike is over to you. So there is no first and second because we have two names, both are winners. Women power. Can
Here a women power. Winners are Vishesha Vaidya and Farnaz Baria. तालियां रुक गई अभी तक तो ये पहुंचे भी नहीं लड़कों मेहनत करो बॉयज मेहनत करो अपने साथ प्लीज क्या करो We thank all the judges for putting in their time and effort. Thanks a lot. And let's have a photo picture. Thank you. Thank you for capturing the photo. Can we call upon Rajesh Kama to please come on stage? Rajesh Kama ji. वो अपने और भी creativity में लगे होंगे. I think he's rushed off stage as of now. अच्छा, Rajesh is coming right from there. The message has gone across. ऐसे कैसे Thank you so much. And when the word thank you comes in, there is a very important word or a vote of thanks that has to come in from the energy center of Sugar Media, the person who is the backbone, who runs around. She makes frantic calls. She's coordinating with the entire world behind the stage, behind the online activities, and months before everything actually physically happens. Kiran, to please come on stage and give the vote of thanks. Somebody who's been giving her heart and soul to India Voice Fest for all these years. Kiran, here's you. Thank you, Viva. It's so good. आप लोग कैसे कर लेते हो ये? So I'm so nervous talking on the mic. Hello everyone. I must say that we have an auditorium full of not just good sounding people, but also good looking people. Thank you for doing so much justice to the red carpet. And now let's talk about the man himself. We used to keep joking at Sugar Media that ड्रीम तो आपने देखी इंडिया वॉइस फेस्ट की, पर इसके लिए रातों की नींद हमारी बर्बाद हुई.
or rather let me put it this way that रातों भर रात जाग कर हमने काफी कुछ किया, but it was amazing. Let's call Darpan on stage. Yes, though he has an army of people with him, but he is a one-man show in itself. The way he leads the team at Sugar Medias, I'm already short of words, and I get teary-eyed whenever I talk about him. But we are very, very thankful to you. We love you. And we love each one of you. Thank you so much for your love and support. To the people who are watching the show online for the last 6 days, including all of you, including most of you, including people who were not able to make it, to Mumbai, and they're watching it even today. So thank you, because it's only because of you all that Darpan's dream has turned into a reality. And thank you so much. Thank you, sir. Thank you. And a very special shout out to Anita De Costa. Anita, my apologies. Anita was one of the jury members for the initial qualifying round of the talent hunt. I thought she's not here. I thought she's not here, so we missed out on including her in the jury. But she played a very important role. So all of you who have taken part in the talent hunt, say a big thank you to Anita De Costa. And with this, all the thank yous continuing, just a few announcements and more. I know सब अभी excited हैं. Party कब शुरू होगी यार? फिर से बोलो ना. भूख लग रही है यार. ये तो मैं भी कह रहा हूँ. चलो भाई, उसकी शुरुआत हो जाएगी. बट जैसे ऑनलाइन के बारे में किरण ने बताया, हम ये भी एक्नॉलेज करना चाहते हैं. जैसे काफी लोग हैं जो देश भर के अन्य जगहों से भी यहाँ तक ट्रैवल करके पहुंचे हैं. It's not just about being in Mumbai. It's really kind of convenient कि मुंबई में इवेंट है तो हम आ जाते हैं. पर जो दूर से बुकिंग्स करके, ट्रैवल करके, रहने का बंदोबस्त करके आते हैं, उन्हें भी हम सभी को एक्नॉलेज करते हैं. I just want you to raise your hands so that I come to know how many people are from out of Mumbai. Out of Mumbai people, raise your hands. Oh, that's quite a crowd. Big round of applause to all of them. I know one team in the center, that big team of 14-15 people is from Nagpur. Cheers to them. Take the name of your city. Jamnagar, Nagpur, or Pune obviously. भदवा, समझ ही नहीं आ रहा है. मथुरा, अरे मथुरा बोलना, वॉइस में क्लैरिटी चाहिए. दिल्ली, और कौन रह गया? बैंगलोर, बिलासपुर छत्तीसगढ़, अहमदाबाद. Oh my God! I was really not prepared. मुझे लगा 2-4 नाम आएंगे, but this is really, sir, it's an acknowledgement. India Voice Fest हो गया ये at the India level. And that is exactly what you guys have proved. Thanks a lot for that. इसके साथ आपको बता देता हूँ, खान पान की बात हो जाए, म्यूजिक मस्ती की बात हो जाए. यहाँ से हम जब बाहर जाएंगे, तो होटल जो है इस स्ट्रक्चर में, you go down and you go out. होटल के रिसेप्शन से आपको एक्सेस मिलेगा 3rd फ्लोर का, जहाँ पर डिनर है और पार्टी है. डिनर में एंट्री के लिए आपके हाथ में, आपकी कलाई में ये प्यार का तोहफा होना चाहिए. अगर आपकी कलाई पे ये प्यार का तोहफा नहीं है, तो आपके पेट की पूजा नहीं की जा सकती. तो कृपया ये देखिएगा, जो ये आपको शुरुआत में दिया गया था, पहनाया गया था, ये अगर है तो ही आप जा सकते हैं. अगर किसी को चाहिए तो भी आप वहां जाएंगे, तो वहां एंट्री पर आप खरीद सकते हैं. और लिफ्ट दो ही है, तो एक तो एक्सेस यहीं से बाहर जाएं तो एक लिफ्ट यहाँ भी है और एक रिसेप्शन से है. जो अपने आप को जवान मानते भी हैं और समझती भी हैं, कृपया सीढ़ियों का उपयोग कीजिए आराम से, फुर्सत से, और बाकी सब लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं. धीरज से, थोड़े समय अनुसार आराम से आप 3rd फ्लोर पर पहुंचे. बाकी की पार्टी वहां पर जारी रहेगी.
अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाजत ऑन द स्टेज। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, 3 cheers for India Voice Festival. Hip hip, hip hip, hip hip. जिन्होंने भी अवार्ड्स लिए हैं, अगर आपको अवार्ड के साथ उसका बॉक्स चाहिए तो आप बैक स्टेज आकर कलेक्ट कर सकते हैं। ये अवार्ड का कवर है हमारे पास। If you want to conveniently carry your award, you can please collect this box from backstage, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हैं। आपको अगर जरूरत है तो कृपया आइए और ये बॉक्स ले जाइए from backstage। एक अमन करके लड़का है जिसका फोन खो गया है। अमन अगर आप यहाँ पर हो, उसका फोन खो गया है। वो फोन बैक स्टेज पे मिला था हमें। आप कृपया बैक स्टेज पहुंचे और अपना फोन ले जाए। अमन, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप अपना फोन अभी ढूंढ रहे हैं तो आप बैक स्टेज आएं और वो फोन ले जाएं। और अवार्ड विनर्स अपनी अवार्ड्स को अगर बॉक्स में ले जाना चाहते हैं तो बॉक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं बैक स्टेज से। बाकी 3rd फ्लोर पे खान पान और संगीत और नृत्य जारी रहेगा। अब मैं माइक बंद करता हूं, नहीं तो वॉइस वाले चुप नहीं बैठ सकते। सर मुझे इशारा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बंद कर दीजिए। अब वक्त हो चुका है सुनने का हमें पार्टी में। चलिए चलते हैं। Okay, sir. Okay.